proficiency in English for professional settings. And right. So basically, before starting today's session, I would like to say thank you to all of you for joining in today. And it's our second session together. This training is not actually, obviously it cannot, these 90 minutes cannot, teach a new language or, anything to anybody, but because we will be focusing on how we can improve our language, because English is not our language. It is an international language, and it is the language of the world, we can say. But obviously, all of us have trouble, in the fluency and vocabulary and grammar when it comes to English. So we'll be discussing how we can all improve our English language, how we can improve the fluency, how we can improve the vocabulary, grammar. And when we are writing formal language, when we are writing formal emails, when we are writing formal text, when we are speaking to the audience in a formal setting, how we can, use certain words and, certain way of writing that is acceptable internationally. Why it is very important to be proficient in English? Because you all are, mashallah, well-known, renowned, and accomplished academicians and educationists, of course. Whenever you will be having a chance, or you all must be having a chance of moving into international setting where you have to communicate with people from different countries. So we all know that English is the only bridge that, builds up this gap, and we are comfortable talking to people. As far as the accent is concerned, I never emphasize on the accent, because obviously we cannot have the British or American or any other kind of accent. Every country has got its own accent. The major thing, the important point is that one should be speaking English, which is correct. One, it is correct. Number two, it is understandable. These are the two major points. So we are not actually trying to copy or imitate, or trying to imitate the accent of any particular accent, British accent or American accent. So that is somehow not possible. We should only focus that whatever we are saying is understandable in professional setting. People from other countries, and even whenever we are sitting in a professional setting in Pakistan, whatever we are saying is easy, understandable. People are easy to grasp the concept. That is what which matters a lot. So since in many schools these days, obviously it's an English medium. Children start studying English at a very young age, but earlier it was not the case, and English actually used to start very late in certain areas, especially the remote areas of Pakistan, small cities. In schools, English used to start from grade 6 most of the time. So that was not enough to actually not enough emphasis to learn a new language, which is English. And we come across many people in our professional lives who are hesitant to talk directly in English. When it comes to writing, people are, I guess, much better in writing English as compared to speaking. And most of the people face a difficulty when they have to talk fluently in English, and they have trouble finding out the vocabulary, the perfect vocabulary, the perfect grammar whenever they are saying something. I was just reading a recent research which actually concluded that the ability to learn a new language, it is maximum at the age of 10, at the age of 6, and it stays very good, the ability to learn a new language, till the age of 18. After the age of 18, the ability to learn a new language starts to decline, and it is somehow very difficult for mature people to learn a completely different new language. For example, if I want to learn French today, maybe I am not able to grasp the language the way maybe my child is doing it. So one most important thing is that being teachers in classrooms, we should initiate and we should design an environment in our classrooms where we emphasize that our students should talk to us in English and in a fluently, and we can communicate in English. So we are basically providing them an environment at an early age where they can learn writing and speaking in English confidently, especially when you are taking presentations from your class of their projects and everything.
I always emphasize that your medium is English and you have to talk in English in presentation. And many students face a lot of trouble with uttering even a single sentence properly. But this is how they are going to learn. And not only students, even us, even we, whenever we are going on certain platforms and we have to talk, we do face difficulty. So this ability to learn a new language actually declines with age. This is a proven fact. This is research. This is what research says. So that's why it is very important that our children should start learning new languages at a very young age. Before starting this presentation, there is another very important issue that I would like to address, because many people must be thinking this, and sometimes this comes in my mind as well, that why in Pakistan we are emphasizing so much on English, why we are so concerned that we have to talk in English in professional settings, and why not Urdu, because Urdu is our mother tongue, Urdu is our language, it's our national language, so why not Urdu? And sometimes we also give examples of Chinese, people, Chinese even leaders, Turkish leaders, who would not like to speak in English, but they would speak in Turkish or Chinese or their own language. And there are many people who are quite against the learning English as well. That why can't we, being Pakistanis, present ourselves in Urdu? So I would like to say that. Maybe yes, it is just right in the case of their prime ministers, and maybe at a very high level. But even in international setting, when you are in a research environment and you are dealing with your certain colleagues, and you are talking to them, and on certain platforms where there are people from different nationalities, again, all of them, though they are Chinese or they are Turkish or they are Germans or they are French or Europeans, whoever, they would again opt for English to talk to us, to communicate with us. And everyone has got their own accent. I used to work with European professors, and they had weird English accent that was very hard to understand for me, because we are mostly used to with American accents and British accents. So again, I would say the lingua franca, the connecting bridge was always English whenever we were sitting. I'm talking about the practical life. There is one live that is shown on TV, that the Prime Minister came, he delivered a speech in Chinese, and everyone was having the equipment where they could understand the translation while sitting in the UN General Assembly. But generally, when we are in a practical environment, we don't get this kind of equipment, we don't get the translation devices and everything. So first of all, we have to be very clear about this, that we are talking about practical grounds. We are talking about our practical lives. And whenever we are talking about practical lives, it is not possible for us to have all sort of equipments and to understand what the other person is saying in Chinese or Turkish or German. We need to have English as a gap that has to connect us. So we should be learning and understanding this with an open mind. There is no complex involved. There is no inferiority complex involved in learning a new language, as you might be. आप सबके बच्चे हैं, you all must be knowing that these days schools are teaching many different languages. My child is learning French. There are certain children who are learning Chinese. Why Chinese? Because obviously there is a lot of trade going on between Pakistan and China, and there's future prospects of developing businesses in China. That's why young students are these days quite focused on learning Mandarin language. So learning a language is not a bad thing at all. It is rather, very beneficial, especially getting admission, sorting admission in international universities. It counts a lot. So yes, now being mature people, every day is a day where we can learn something. I learn every day. Obviously you learn every day. All of us have this attitude, this positive attitude toward life. There is no magical book or there is no magical lecture that can, one day just simply enhance our vocabulary or enhance our grammar or make us very proficient in English. It's an everyday job, and there are certain materials, there are certain habits that we can develop which will help us learning a new language, and gradually we will feel that we have actually improved that language, and we will feel the difference in our professional life. So starting the presentation after this introduction, the basic problem that we are facing in Pakistan is that pressure to speak English in the workplace continues to grow as more and more companies invest in globalizing their teams. And globalization is basically the phenomena, as you all know, that actually
again, emphasizes on the importance of speaking English as a professional language. However, mastering a new language requires time and resources that many people, especially adults who are no longer in school, struggle to find. Because when once our learning processes stop, then we are not that eager to learn or to study. But as I said, it's a daily process. It's a process that involves changing your habits. And once we start changing our habits, we will definitely feel a difference in our daily life. So we must set clear objectives to start improving English proficiency to improve our professional communication in today's world. Let's have a look at the learning outcomes of our presentation today. The basic learning outcomes of this 90 minutes presentation is that to understand the importance of English as a language in professional setting, to understand various techniques to improve vocabulary and fluency in English, to improve verbal communication skills in English, and to practice through online participation in various given situations. आपने भी बहुत सी international workshops you must have attended. I have attended many workshops, and whenever uh, it was about learning something, all the trainers, all the mentors, they used to come up with activities, certain practical activities, and all the audience would get indulged in them. They would get they would participate in them, and together all of us could learn something. Together all of us could come to a better conclusion, and together all of us can understand that how through mutual activities and brainstorming during these sessions, we can actually enjoy, number one, and number two, that we can understand the learning outcomes as well. So today's training is also designed like that. I would actually like to request to all of you, all the respectable madams and sirs, that by the end of this presentation, I do have some activities designed specially for this training, because this is actually a language training. And for the language training, I need all of you to actually participate and come out and speak and share your experiences. This is how actually we can see that how good we are in English fluency. For example, I would be asking you to talk about some given idea for like 1 or 2 minutes, and you have to express yourself in in a nice in a nice way, in a professionally, the way you speak English in your organization. So you have to come up with that. So be prepared for that mentally. We'll be doing that by the end of this training. It would have been a lot of fun actually if we were doing it face to face, but we would like to do the best what we can do online as well. Talking about the training module, importance of English in professional setting, वो तो हम साथ साथ discuss करते रहेंगे. Then we will also discuss certain tips to speak better English in professional setting, and obviously audience participation is very important. How English can be beneficial at workplace? First of all, we have to understand the importance and why it is important to be proficient in English. As we have discussed that as a lingua franca in almost all of the developing nations all over the world, English is the preferred language in the professional community. As many people nowadays do not speak the same native language, we all understand that it's very important to speak a language in order to learn it. हमारे यहाँ बहुत से आजकल जो एक मेट्रोपॉलिटन में जो लोग रह रहे हैं या जो बिग सिटीज में रह रहे हैं, young generation is somehow they are not able to speak their mother tongue, जो उनकी एक मकामी लैंग्वेज है, not the national language, जो उनकी जिस फॉर एग्जांपल पंजाबी का कोई डायलेक्ट है या सराइकी है या पश्तो है. So somehow the children who are not exposed to that environment, they are not able to take up that language, and they are only sticking to Urdu and other languages that they are learning in school. So first of all, it is very important, in order to learn a language, the most important thing is to speak, to talk in that language, to speak in that language, to write in that language, and without that fear that I might be saying something which is not grammatically correct, I might be saying something which might be having a wrong vocabulary. We have to take those fears out of our mind. The way just like बच्चा जब सीखता है, जब एक बच्चा ग्रो करता है, सीखता है, तो हम वो काफी दफा पे ऐसा होता है कि दे स्पीक इन द रॉन्ग वे, वो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं ग्रामर या गलत सेंटेंस इस्तेमाल कर लेते हैं. So we gradually keep on correcting them. This is not like this, you have to say it like this, right? Or we somehow repeat the same sentence in the correct way, so the child can absorb that whatever I said might be having some flaws in it.
So as I said, developing a habit. Until unless you won't start talking in English daily in your home, at your workplace, with your students, uh, you won't be able to have a strong grip on it. Initially, while delivering your lectures in class, while everyone, all of us delivering lectures in class, we should try to start giving our 1 or 2 hour lecture thoroughly, completely in English. And then we should encourage our students as well, to answer, or to participate in the classroom in proper English and proper professional English language. So this is one way of improving it. And the ability to cross international borders and transcend language compatibility barriers have made English the most sought after language in today's corporate world. Other than that, the proficiency of the language has also made it a vital part of success in the highly competitive corporate world. Many reputed organizations around the world rely on English as a means of communication in everything from emails to corporate documentation to even popular and well read business resources, both in print and over electronic media. Whenever we are writing even a research paper, you would understand that, you know, writing down the literature review and writing down the introduction is an art of writing a research paper. We might be very good in our methods, we might be very good in our methodology in, providing the right formulas and, using the right statistical analysis. But our introduction matters a lot, our literature review matters a lot. And this is where, we feel our weakness, that we are not native English speakers. And this is the point where sometimes we need help of, foreign experts as well, if we are going to publish a research paper in a reputed international journal. So, national journals do, accommodate to normal English language, or, if even if it is not written to that level of proficient English. But if we are planning to publish our research in international journals, we somehow need to take help of experts. Or if we are not taking help of an experts internationally, then we have to be very we have to actually work very hard on our introduction and literature review. This is where our English actually comes up. This is where we have to write the professional English in order to impress the reviewers. So you all might have experienced that. I have experienced that. It is a lot of tough work actually whenever we have to do that. English is being used as the official language in over 70 countries. And fluency in English, both written and spoken, plays a critical role in many aspects of corporate life, from securing employment to communicating with clientele and achieving cohesive business partnership all over the world. So there is no denying the fact that yes, English communication is somehow very important for all of us, and we cannot neglect its importance. It's an international common tongue. It's the language of academia. Now, here it is very important. It's the language of academia. Those who actually deny learning English, I don't know how they are, because everything available on Google, everything available on Google Scholar, whenever we are searching for new research, when we are trying to write research papers, being an academician, obviously, this is what we do. All the researches are in English. And if we come across any important research which is not in English language, it's in some other language, we always face the difficulty of translating it into English because we are unable to understand it, no matter how important the research is. If the paper is published in German language, if the paper is published in Hebrew language, I had to include some of such researches in my research, and I actually faced a lot of difficulty how to translate them, how to understand them. So there, even again, if we have to be a pro, and if we have to be good at research, English is the most important thing, while because all the literature available on Google Scholar, all the literature available in the research world is mostly all English. And it actually it is also very important to know that even the Chinese researchers who actually claim that they don't give that much importance to English, all the research which is available on international platforms is in English. Because if they want citations for their research, if they want citations for their research papers, either they're Chinese or they're Turkish or they're Germans or they're French, they have to publish their research in English. Then why, if they feel that English is not that important, why do they need to publish their research in English? That they could have published the research in their own national language. Because obviously every researcher needs citations for their work, and those citations cannot come until unless it is
in a language which is commonly understood by majority of the world. So uh, it actually gives you access to a wealth of written media, online, printed, everywhere. It's all the information is in English. Especially when you are traveling, it is very handy. You are traveling to different countries. Obviously, you can understand how important English is. And for international business, it gives you convenience in online research, meeting new people, and it's a language of the media industry. And it gives you an edge in other jobs as well, obviously. Job structure, job market. You must have experienced this, that people who are fluent in English and they have a good grip of English language, they are somehow, better than other people in professional lives also, because they can be presented on any international platform. Because while sending them to international platform, nobody is scared, nobody is afraid that they won't be able to express themselves. They would be easily, expressing themselves. And it allows you to express yourself in a language that actually everyone understands. So if you are a professional looking to improve your business English, consider incorporating these into your learning plans. What we can do actually about it. Let me tell you that if anyone, all of us, sometimes we need some serious training in business English or in professional English. So British Council and many other organizations like that are offering proper programs to develop and to improve the proficiency in English. So anyone can actually, at any age, it is not age specific. We can always go and we can take, join them online as well, and they are available for Pakistani nationals as well. So setting specific goals is one important thing that I always tell my students, that you shouldn't be setting unrealistic objectives and unrealistic goals. That in 1 month I will be mastering this language, or in 1 month I will improve drastically in English speaking. We have to set the goals that are achievable. They are specific. So uh, we have to have goals which have a particular timeline. We shouldn't be having open-ended goals. For example, a goal like that, I want to be able to give a presentation in English, is too vague. And instead, the example says that you should be having a goal that I want to be able to comfortably deliver a 10 minutes or 20 minutes fluent presentation in English about, sale goals without using a PowerPoint by the end of August. Even, using PowerPoint, we teach this in our universities as well, that, our students have to come up with a PPT or a PowerPoint presentation in order to present themselves. So slides are basically an aid for the speaker, for the presenter. A good presenter actually doesn't need slides, especially if it is a face-to-face communication. You just need to have your points handy, and you have to be fluent whenever, whatever you are saying, whatever you are talking. Slides are actually, yes, they are a very good aid for the audience also, that they are able to grasp the concept. But I have attended many trainings and workshops where the international trainers never used any kind of PowerPoints. They never used any kind of slides, but their trainings, their presentations were very interesting and they were very engaging. So yes, these are just the aids. Most of the time, what happens in professional lives as well, even at you must have experienced. Let's not talk about younger students of graduation and masters. Even at PhD level, many students come up with their research proposals and their final presentations of even their thesis, and they come up with slides which are loaded with text, and then they start reading those slides from A to Z, because they are afraid that if we are not going to read from those slides and we are not going to read from those sentences, what will happen, that we are going to forget what to say. So they are basically using all the textual material from the slides and they are just narrating it in front of the audience, which becomes actually very boring. Until unless you won't use your body language, you won't walk around, you won't have an interaction with the audience, you won't be having an eye contact with everyone, you won't be using your own personal examples, you won't be able to deliver a good presentation. And most of the time, the confidence actually shatters because we are not fluent in English. Again, the same point. Even at at PhDs, at this level, people are not able to express themselves in fluent English. So this is actually a problem that is everywhere in Pakistan. And this can be overcome only with practice, practice, and practice. Like yesterday, we were talking about communication skills. We raised this point that it is only possible through practice.
You have to practice every day. Now we will see what we can do every day, what habits that we can include in our daily life that can help, that can be helpful for uh, learning English in a much better way. Find ways to practice English every day or every week. Regular efforts, they build a momentum and they create habits of learning. For instance, try to read one industry article a day, deliver a presentation in English once a week, or write your weekly team updates in English. Writing, journaling, if you are in habit of journaling, try to write it down in English. Try to give one presentation at least for 10 minutes every week in English, or reading articles daily from newspapers. Other than that, we do all watch the local media news channels. So other than that, if we can spare some time, this is a general tip that I give to my students as well. If we can spare some time watching BBC or CNN daily for 10 to 20 minutes in the evening, it will be having a lot of benefits actually. Number one, that we will be having a very good outlook of the international scenario, what's happening, other than what's happening in Pakistan and what are the problems that we all know. We'll be having a very good exposure of what's happening internationally in the world, what is the world around us. And number two, while listening to them, it is going to improve our listening skills, which are again very important. As you know, you might, all of you, or some of you have appeared in IELTS exam. So in IELTS, actually, learning, the whole test is designed in a way that there is a listening experience, and then there is a speaking test, there is a listening test, and then the writing test. So it is actually a compilation of many different abilities. So listening is also very important. Understanding what they are saying is also very important. At the speed at which they are reading their news, at the speed at which they are showing their reports, we should be having the ability to understand them. A very simple drill that you can try today, that we can just switch on CNN on and BBC, and you can sit in front of it and try listening to the news or the reports they are saying. If you are able to grasp uh, the complete concept of what they were trying to say, the report, you are able to recall it properly, you are able to completely understand it, and again express it the way they have told us, or the basic concept they have discussed, you are able to do that. That means that you have got very good listening skills, and you can actually grasp that and completely you can listen to them, you can understand them. But if you are facing a difficulty in understanding their accent, or you feel that the speaker was actually talking or speaking in a very fast speed that you were not able to absorb, that means that you have a difficulty in your listening area, especially where it particularly related to English. Because many people complain that if they are listening to somebody in English, they need to slow down. Why we need somebody to slow down? Again, because it is not our language, and we are not able to absorb what the other person is saying. So that shows that perhaps in that area we need more effort, we need more hard work, so that we can understand the person even at whatever speed they are speaking in English. So the best way to do that is to listen to BBC, CNN, their reports, their news, and then ask yourself if I'm able to grasp the idea completely or not. So these are the daily habits that can actually help us a lot. Then believing in yourself, of course, whenever we are learning something, it's very important to have confidence in yourself. As I said in the beginning of the presentation, that it is very the research says that the ability to learn a new language, it actually starts declining after the age of 18. But it doesn't mean that people who are in mature ages, they cannot improve their language, because people in 50s, people in 40s, they can even start learning new languages. The process can be slow, but it doesn't mean that they cannot improve their language. So every day is a day of improvement. Every day, I learn a new word every day, I learn a new vocabulary every day, I learn a new language every day, language words every day. So and sometimes even we are learning from our children, because the generation Z or the generation Alpha, they have a different vocabulary as compared to our vocabulary, and we are not able to understand the words they are saying most of the time. So sometimes we have to stop and ask them, all right, the word you said, what does it mean? And they are going to tell us, that this is what is, and that word we haven't
might have heard earlier in our lives. So this is something new that the new generations are using. So learning never stops, and there are many social media platforms. All of us are in, on social media platforms. We are using mobiles. There are certain applications that help us a lot. For example, there is a very handy application. It's a very good application, Duolingo. You might have heard about it. So Duolingo is a language application where you can learn a new language every day. You can just choose the language which you want to learn, and they will take a test of you, or they will start from the at the beginning, beginner level, and then the medium level, and then the expert level gradually. So at the beginner level, you will be given a test of 5 minutes daily that you have to pass, where they will be asking you different vocabularies, different words, and then you have to attempt them on your mobile. So it is a very handy application. I recently came across a research in my university. A student was doing that, Duolingo app is extremely popular in our young generation, and people are learning new languages like Chinese and French and Turkish, and even they're improving their English through Duolingo. So such applications, social media, such websites, they are very helpful. And every day they can teach us a new word. Every day they can teach us a new vocabulary. So believing in yourself and struggling toward it, and revising your goals, and making your goals smaller and manageable. It is not important that from day one we try to speak very fluently or anything. It's a gradual practice that actually leads us to our goals. And the next thing is, enjoying the learning experience. Most of the time, rather all of the time, whenever we are learning something, we take it as a burden. Unfortunately, it is a burden for us to listen to somebody, to have a workshop, to have a training, to have a class session. So it's always a burden. But trust me, when we are taking these things as a burden, we are actually putting double effort, I would say. Double the effort, actually. And why double the effort? That actually we are bored also, we are not enjoying it, but still we have to sit and still we have to listen to it. Rather, if we can make it an enjoyable experience for us, if we can be more inclined toward learning, it is going to be an enjoyable experience for us, and it would be lesser of an effort. So enjoying the learning experience is having a positive attitude toward learning English. It is again very important, and no one should think ever, although we all are, obviously you all are very senior people, but at any age we should never be considering that what we need to know is enough, or what we know is enough and we don't need to learn more. Like I said, every day is a day where we learn something. So enjoying the learning experience is again, something very important. Authentic English materials. So as I said earlier, that it's an age of social media, and a very important thing that we have discussed about TV shows, watching authentic English channels like BBC, CNN, and other English channels, of course, as well, which you like to watch. There are many channels of BBC that you can watch. Other than that, there are podcasts. Podcasts are something that you can listen on Spotify when you are listening something, and TED Talks are very interesting and motivating. And along with it being interesting and motivating, they are an excellent source of learning new English words and vocabulary. These TED Talks are available on YouTube. These TED Talks are available on podcasts. These TED Talks are available everywhere. So you can just spare 5 minutes of your day and you can listen to one TED Talk. And this TED Talk is going to inspire you, motivate you, and at the same time, it is going to teach you many new different words. It is going to enhance your vocabulary as well. These are the easiest and the most enjoyable ways of learning English or learning new words. Whenever I am driving, sometimes you're listening to music, but many times what I do that while driving, I just switch on a podcast of TED Talks, and the half an hour drive that I have to do, in the meantime I am listening to a complete podcast of TED Talk. That actually gives me a motivation as well, and along that giving me a motivation, it I learn how to speak. I learn how a speaker can grab the attention of people, how you can bring fluctuations in your voice, how you can give a good speech, how can you can deliver a good training, the things that are related to my field,
how I can deliver a good lecture in classroom, how I can improve my vocabulary. So these are small, certain habits that you have to incorporate in your life. And this happens on a daily basis. All of us commute to our work daily. We come back, we go, early in the morning, then we come back home. And the time, I also tell this to my students, that the time that you are spending during your commute, you can use it, you can utilize it. Why not? Why not utilize it in learning something? So an excellent way to utilize is that you can tune into some good TED talk and you can just listen to it on the way. And this half an hour is actually the time, all the time you need to learn and be proficient and be fluent in English. So the better preparation, they better prepare you for real life situations, like I said, and they are often more enjoyable than strictly educational materials. Seek out good writing, watch great speakers, and try to imitate the format, structure, and language those whose work you admire. मुझे एक बड़ी अच्छी तरह याद है कि when we were young and we used to do debates, I was always doing debates. So most of the times we used to write down our debate and we used to do it in our way. But now I see, another practice that is being adopted in schools is that they tell them to watch a TED talk, choose their favorite speaker, and then they ask the children to write a speech which they obviously they are inspired to write, or the way whatever they want to talk about, and then they have to imitate that particular TED talk person during that. In this way, when they imitate a very good speaker, when they imitate how he or she is using the body language, how he or she is walking on the stage, what words he is using, where he is giving stresses, where he is giving pauses, where, this is the way they learn how to speak in front of the audience. Rather than, just going to the audience in their own style and delivering a debate and, coming back, they are learning the international standards, that how you actually deliver a debate or how you actually deliver a speech while standing on an international stage. So we can obviously teach these things to our students as well, that whenever they have to speak, they can choose one speaker from TED Talks and they can imitate them. Imitating is not bad at all. We can imitate the best speakers and we can learn the way they present themselves. Because speaking in English is one thing, and presenting yourself in a proper, presentable way is another thing. So exposure to authentic materials not only helps with language proficiency, but it can also enhance our knowledge of a particular field. Join a positive learning community. I would definitely like to ask you this, that how many times you are encouraged in your professional setting to talk in English? How many times your colleagues, your friends, your family members, they have helped you in learning a new language? For example, I might be having a difficulty, or I might have faced difficulty, speaking in English. How many times I was confident that I could talk to somebody fluently in English at my workplace? How many times I was confident that I could talk to somebody at my home, and I can ask them to, sit with me and talk with me for at least like 5 to 10 minutes English, or maybe, the general way we communicate in our home. If I am struggling to improve my English, I would like to communicate most of the time at my home in English. How many times it would happen? And how many people actually encourage you at workplace? It is very important to have a positive learning community. Your colleagues, your friends, when we interact, we learn. So the easiest way of learning a language is that we can interact with people around us in the same language. It is a very common experiment. You all know that, when a child is born, जिस language में we communicate with the child, he or she learns that language at पहले सबसे पहले basic language वो सीखता है. वो भी हो सकता है कि that is Punjabi that is being spoken, and that is Urdu that is being spoken at home, or maybe that is English. So it all depends how you are communicating and interacting with your child. So here I would like to go to the audience, and I would like to ask that in your professional setting, in your organization where you are working, how many times you are encouraged, and do you feel comfortable communicating with your colleagues and friends at workplace completely in English about your professional matters? So yes, please. Any feedback from your side? Anyone would like to say anything? Naveed, Mr. Naveed has raised his hand. Mr. Naveed, would you like to say something?
Ms. Tasneem, would you like to say something? Assalamu alaikum, ma'am. Ji, Would you welcome. please re-mention the site used for learning languages? It's Duolingo, Duolingo. DUO? Lingo. It's Duolingo, and it's an application that you can download on your mobile. Okay, And thank you. yeah, welcome. So I actually asked that, how many times are you encouraged at your workplace to talk in English with your colleagues and with your friends? Would you like to share your experiences? Yes, Assalamu Ms. Shabana. alaikum, ma'am. We are never encouraged in our colleges to speak in English because people don't feel comfortable. And in fact, they think that they are posing, they are making something different. So that's why I say we are never encouraged. Right. And why do you feel that, why you are never encouraged? Is there a fear around people that, or is there The a... people actually, sorry, but the people think they are just posing, they are making something, someone, they are making us, or they are letting down us. You can say it like that. Okay, right. Yes, thank you. Thank you so much. So, unfortunately, yeah, anyone else would like to say something, or we should move on? Yes. Assalamu Yes, alaikum. please. Welcome, Stan. It's me, Farnaz Hadaf. I have been teaching English for the last 25 years. Very nice. And the difference that what makes the difference or what Yeah. makes English language not so attractive or not so likable in our environment is that is this more or less the prejudices that we hold against the people who brought English into the subcontinent, the oppressors, you know. Yeah. And then later on, gradually, it is identified as a language of the rulers, the ruling class or the elite class. That is what makes the difference. What my colleague was referring to is that there is a bias against those who speak English in English. The reason behind that or the reasons behind that are many. Right. There might be a reluctance, a hesitation of people who haven't learned English so well or who are not well versed in English, in speaking in English. Or secondly, they are not ready to learn. Yeah. They Right. hold, they say, why should we learn English? Why not Arabic? So they go into comparisons. Right. Right. Excuse me, can Then I? they say, Okay, please carry then on. those people who speak in English, Mm-hmm. uh, they say that, oh, they are talking in English just to impress us because it is the language of the elite class. Okay. Right. That is one of the reasons why people hesitate. Second most important reason is among the children, among the students, because there are so many levels of learning English in Pakistan. You go to villages, you go to government schools, and you go to convents, and then to those schools, Beacon House and those elite schools. There is hell of a lot of difference because there is direct method, there is indirect method, and when we, as college teachers, when we enter students or admit students here, and they are deficient in the basic skills as well as the rules of English. So in their school education, they haven't been taught enough or they haven't been motivated enough towards English. For example, as you were suggesting that Right. we should motivate them, inspire. There are so many inspirations, BBC, storytelling, story writing. These are the things that we learned in convent. So we were given motivation. So the thing that lacks in our school is motivation. The teachers are not up to the level of, unfortunately, at school level. They are not up to the level so that they could teach English. So they avoid teaching English. They themselves lacked in the basic structure Right. and the skill. So they discourage.
Right. And So all I along could. the way. So, Ji, please, See, would you can like I to say something? Yes, thank can you. I add Thank a you so little? much. Can I add a little? I'm Yes, sure. Sarwar from Penn College. I really agree. The last speaker, she has really explained all the reasons. I would like to just sum it up, and there are three main reasons which I feel. Number one is the bias which is attached with the English language speaking. Number two is the need which is not never felt by our colleagues, and number three is actually it is being comparison is being made always. So that's why I think our student in the heart of our heart, our students always love to speak English. They want to be fluent. They appreciate people those who are speaking, but the need is never felt by them. It's the examination system also which is never asked for the speaking skill enhancement. So whenever it is needed in the private sector, it is being forced, it is being implemented, it is being asked, and to improve their communication skills in English actually. So these are the three things which I think. It is the bias and it is the need which is to be felt, which is really to be needed, and the connotation, the negative connotation which is being attached with the English speaking community and with the English speaking people. So those who cannot, they really think that it's bad and it is not something. They think that we are just a superficial people, and they don't take it. English is not a language of any particular nation. It's a medium of expression, it's a medium of communication. It should be taken only just a tool of as a language, not it shouldn't be attached with any of the religion or any of the class or any of the nation. So when we will realize this thing, that we will own it as it is our own language, then we will start speaking English. Very well said. Very well said. Yeah, very well said. And all of you have actually given your input, and it's completely true that most of the people in Pakistan have attached prejudices with English. And here I would like to mention a very important thing, that there are many students who come from very humble backgrounds, who come from government schools, and they are brilliant, they are genius, and they somehow win scholarships to international universities. For example, Fulbright scholarships. There are many students who have won Fulbright scholarships to foreign universities, and they came from humble backgrounds of government schools. But they actually, we have to teach our students that they didn't attach those prejudices of English, like Madam said now, that it's just a medium of communication. It's just a language. We don't need to attach it with Gora and Kala, or the ruling class, or the elite class, or Fala, because it's just a medium. It is actually the laziness. It's one's laziness that we don't want to learn a language. We can't do anything about it. The person who doesn't want to learn doesn't want to learn. But it's just a medium of communication, and especially if we would like to extend it, if we would like to go beyond our national boundaries, and we would like to go on international platforms and present ourselves, we need that medium. I myself, I do not come from convents, or I do not belong to Beacon House system, or I do not belong to Lahore grammar school system. But it is actually the continuous effort of one person that brings you to the point where you are comfortable communicating with international community, and you are comfortable standing in front of the audience and express yourself fluently in English. So this is the prejudice that we actually need to remove from the minds of our students and from the younger colleagues as well, because you are, mashallah, the heads of your organization. So you need to remove that prejudice. If somebody is speaking in English in the professional setting, it doesn't mean that he or she is boasting about something, or he or she is showing off something, that look, I can speak English. Because I don't think that speaking English makes somebody, maybe that's a prejudice in our mind. If somebody is speaking English, he or she is trying to portray himself or herself something, or trying to be an elite from the elite class. But actually it doesn't make us from the elite class. It is just a medium of English, a medium of communication. And of course we are comfortable communicating in our family, in our um, personal structure, in Urdu or Punjabi or whatever our common national local language is. We are comfortable doing that. But since we are professionals, since we are in the professional field, since we have to move out of the home, and we have to work and with the world, we have to move with the world. So we need a common medium, right? So that was a very good input. Thank you so much. And now moving back to the presentation, that we have discussed that how joining a positive learning community helps in understanding English. And then the very important thing is that you have to ask for the feedback. Asking your colleague for the feedback
Asking your friend for the feedback is very important. Sometimes what I used to do when I was doing in my, writing my research papers, or in my PhD also, you might have also done it, that I used to write down something. I used to write down a paragraph or something. Sometimes we write and we feel that, wow, what have I written? It is excellent. I have just, done some marvelous job. But when our professors used to read it, or some member of our family, I used to give, just read it down and let me know your feedback. What do you think about it? So they would read it, and everyone would come up with a different feedback. Maybe my professor would totally, dislike it. No, it's not. It's vague. It's not good. You need to improve it. Maybe somebody would come up with a different feedback. So even for the written communication, asking for a feedback is a very good thing. You can always ask people for the feedback. And it is again, thoda sa jaake we will discuss it, why it is important to record yourself. When I joined broadcasting का जो पहला step था, the first drill I had to go through for 6 months was only to sit in front of the mic and talk about anything, talk about any subject, any topic. Just pick up something. I used to wear my headphones and I could just listen to myself, whatever I'm saying. And then after listening to that, even they would give me a recording of what you have said today. So I would go home and I would again listen to that recording for 30 minutes. How do I sound? How I'm sounding like? मेरी वॉइस की पिच कैसी आ रही है, इस वक्त इसका टेम्पो कैसा जा रहा है, इसका फ्लो कैसा जा रहा है, हाउ इज माय फ्लुएंसी, हाउ इज माय स्पीड. So this was a constant drill, constant practice. And I do remember whenever our shows used to go down from a certain level, our station heads would tell us that go home and listen to yourself, take the recording of your show and listen to yourself. So we used to do that. We used to come back and we used to listen to what we were saying. Actually, in the trainings I attended with DW News and Deutsche Welle, they would tell us, listen to yourself. And we would do that. And then I would realize, at some points that, this word that I said, my accent was weird, or I didn't pronounce it in the right way. Next time when I'm going to say this word, I'm going to pronounce it in the right way. I would go up to Google, or I would open the dictionary and I would see what is the right pronunciation for this word. So nobody is always free to tell us, and nobody is always free to give us the feedback that, you said this right or you said this wrong. Being adults, it's our own responsibility to listen to what we are saying, to pinpoint our own mistakes, to point out our own mistakes. This is what I said wrong, and I'm going to improve it next time. So this is what I did with myself, and still I do it every day. I listen to myself, what I'm saying and how I'm saying it. So after asking for feedback, moving on towards, another important area, which is that, you speak to improve. We have discussed it. Don't focus on your mistakes. There are many times that we are wrong when we are saying something. It's okay. Just move on. It's important not to make that mistake again, but just move on. We might not be, we might be saying a word. We will fumble many times during the sentence. It's okay. Next time we will say that, we'll be comfortable. Ask your friends to correct you. इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल एम्बेरसमेंट की बात है, या जो अच्छा फ्रेंड होता है, दे ऑलवेज टेल यू योर मिस्टेक्स के you should have, if improved this point, that would have been great. Then again, as I said, record yourself speaking. This is the most important thing you can do for yourself. Speak particularly about the things you enjoy. जरूरी नहीं है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें या हम ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें जो कि हमें इंटरेस्ट नहीं करते. We can talk about subjects that actually interest us, and we can talk about them in a much better way. Cross training. Cross training is a very important element when we are learning a language, when we are improving a language. Cross training includes listening, reading, writing, and then listening, reading, writing, and writing, reading, listening again and again and again and again. This is called cross training. You shouldn't only be focusing on listening. You shouldn't only focusing on reading, or you shouldn't be only be focusing on writing. Because if you are weak in any of these areas, if you are weak in any of one particular area, for example, you might be a very good writer. You are able to write beautifully. But when you are told to talk about your work in front of the people and present your work in front of the people, you are not able to talk to them. You are not able to communicate what you have done. You are not able to communicate your effort, your hard work. That's a wastage. So you have to work toward your writing, your reading, your listening, your speaking.
all the areas. So cross training again is very important. Practice English in front of a mirror. आपने भी यकीनन ये students को भी आप कहते होंगे, and the teachers also tell this. My teachers used to tell me this, that practice in front of a mirror. Yes, it does help, though it looks very funny, but it does help. It at least shows us our body movements, how we are standing, how we are moving our hands, how we are using our face gestures. Are we too intense? So if we are going very intense and very emotional while we talk, then we have to control it, right? So sometimes we all do get emotional and we all do get very intense when we are talking. So then using a pronunciation app and a voice recorder. Voice recorder, again, I said, pronunciation app, in old times people used to open up the dictionaries and see the right pronunciation of the word. Now it's very easy. You can download any pronunciation app, or you can just Google it and, ask Google that give me a correct pronunciation, or Google will give you the right pronunciation, in a second. And you can, and it will actually say the word 2, 3, 4 times, as many times you want it to say the word for you, and it will say it. And then you can actually say the word in the right way Google is saying it. So that's the pronunciation app. Use apps to find native speakers. Another very important thing is if you can interact with the international community and you are working with them, when you talk to them, when you interact with them, that actually improves your language. हम सब ने देखा कि जो हमारे बहुत से colleagues हैं, बहुत से जो हमारे इर्द लोग हैं, who have gone abroad for their education, they might not have very good grip on English before leaving for that country, but when they come back with a very good grip on English. Why? Because they were among the native speakers. They were discussing things, they were talking to them every day. So these small table talks, even they help a lot in improving your English. Watching English media content. Sign up for online courses. As I told you, British Council is offering many online courses. Even all the universities, including Harvard and Cambridge, they are offering online courses. Of course, you have to pay for that, and then you can start learning. But the courses I am mentioning about British Council, they are inexpensive. They are not very you can say expensive courses, and they are for 2 to 3 weeks maybe. Online courses, and they are being taught by the native speakers in British Council. They cost you around like 10,000 for one course of 4 weeks or 3 weeks, something like this. But you get a very good certification for English. Even I have attended many courses at British Council with Edwin Tennant, and he used to come from London and he used to deliver us the basics of not the basics, actually the academics of grammars, and when you are in the classroom and how you have to do the classroom communication in English and using the right grammars and vocabularies and everything. So they're very interesting courses. You should, if you are interested, you should sign up for them as well. Then speaking fluently isn't just about saying the right words. It's also about body language, it's your tone and confidence. So practice speaking in front of a mirror, paying close attention to your gestures, expressions, posture, and you can even have a friend or family member give you feedback. So yes, again, the feedback is very important. English language has some weird rules, and sometimes the best way to know the right pronunciation of a word is to check the dictionary or to check it online. There are also apps that use voice recognition software and tell you if you're pronouncing it the right way or not. You can also record your own voice and play it back to check your progress. We have discussed these things again. Now, watching English movies and shows. This is the easiest way to improve our English. Netflix पे वैसे भी as you see कि अगर आप जो भी use करते हैं medium, sometimes I use Netflix, so I can talk about it. So they do have the subtitles of every movie in English under that. So you can read the you want to read it or you don't want to read, but subconsciously we are reading, unconsciously we are reading those subtitles. That is also a very nice way, excellent way of improving our vocabulary. When we are watching the English content, when we are watching English movies, and especially on these streaming devices like Netflix or Amazon or anything, you can download materials. You can download British movies, not only American. You will experience a great difference, obviously, in the accent of Britishers and US English. So you have to choose, and you should expose yourself to both streams, right? So this is also a very good way of learning it, watching content, watching English content. अगर आपको याद होगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान में
हिंदी चैनल्स जो थे वो इंडियन चैनल्स बहुत ज्यादा थे, स्टार प्लस एंड ऑल कलर्स और सारा। तो पाकिस्तानी अवाम जो थी हमारी हिंदी बड़ी जबरदस्त हो गई थी, चिल्ड्रन इवन स्टार्टेड यूजिंग वर्ड्स ऑफ हिंदी। एंड वो तो बहुत अच्छा हुआ कि द चैनल्स वर शट डाउन immediately after some time कि you have to shut it down because they were actually spreading their language, they were inculcating their language in our next generations. और अगर वो बंद ना होते channels, so I was quite sure because mothers used to watch those dramas and soap operas all the day, so children were actually learning that language of Star Plus and colors and everything, which was unnecessary. उसको इतना सीखने की जरूरत भी नहीं because obviously it is not a medium of communication internationally, so we should be good in Urdu otherwise. So watching content watching is a very strong tool for learning any language, even for learning the culture, even for learning about some particular place. That's a very strong tool, and same goes for the language as well. Again, it is the same thing that watching series on Netflix might not exactly improve your debating skills or formal register, but it helps you understand the language better. Because प्रोफेशनल इंग्लिश अगर हमने इम्प्रूव करनी है तो सबसे पहले तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि वी हैव टू बी फ्लुएंट इन नॉर्मल इंग्लिश। नॉर्मल इंग्लिश में फ्लुएंसी होगी तो फिर हम प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाके भी अंडरस्टैंड कि हमने क्या वर्ड यूज करना है प्रोफेशनली, क्या वर्ड हमने यूज नहीं करना प्रोफेशनली। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं छोटी छोटी सी चीजें हैं, द वेरी स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। we in professional English we don't say that we are sorry, I'm sorry for this. We say I apologize for this. We don't use sorry. Sorry is a non-formal, informal word. Formal word is to apologize, and we should avoid saying but I would not like to. We should say however, and then the next clause you want to put in. इसी तरह से बहुत से वर्ड्स हैं जो कि आपको बहुत इजीली अब पता चल जाता है कि इनफॉर्मल क्या है और फॉर्मल लैंग्वेज में मैंने क्या यूज करना है। एनीवे की जगह आप नेवरदलेस यूज करें। You should use nevertheless. You have to show me your work tomorrow. You have to demonstrate your work tomorrow. These are small vocabulary के अंदर जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, जो कि हम जब हम ईमेल्स लिखते हैं टू आवर फॉरेन प्रोफेसर्स या आप कम्युनिकेट करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो यू हैव टू कीप दीज थिंग इन योर माइंड। फॉर एग्जांपल द सेल्स विल गो अप, you would rather say the sales will increase. And ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, talking about using the word of job, I am currently doing this job, rather you should say I am currently in the occupation of, and then you saying think about, you should say would you like to consider. So इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी वोकैबुलरी है जो कि हम डेली लाइफ के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि the first and foremost thing is to be fluent in English, basic English. Then comes the professional English, of course. So also there is a very important tip here that there is a plethora of documentaries. Documentaries are an excellent way of learning. Try anything by David Attenborough to start you off, to be found online as well. British accent में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, you want to learn good British accent and how they talk, actually you can watch his documentaries. Being exposed to a language for the length of a movie might help you actually start thinking in English. So these definitely help you a lot. Then newspapers, magazines, tabloids. इसके साथ साथ current affairs को सुनना in English, that is also again a very good way of learning this language. मोस्टली हमारी जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश को सीखती, उनकी बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है व्हेन दे डू चैटिंग में भी इफ यू आर चैटिंग इन इंग्लिश। बट बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रोमन उर्दू में भी लिखते हैं और उसके ऊपर चैट करते हैं। सो दैट इज ऑब्वियसली उसमें कोई फायदा नहीं है। बट अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी चीज़ सिखा सके कि इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी थ्रू ईमेल्स और ऑन मैसेंजर्स आल्सो, if you're using English language for that, that can also help you improve your English also. So discussing all these things, मेरा ख्याल है now we should another very important thing is word of the day. आपने बहुत सी websites देखी होंगी, बहुत सी ऐसे social media apps हैं which give you word of the day. For example, if you download quotations.com, if you download dictionary.com, they would give you one word a day. They would give you, and trust me, those are the words you have never heard of before. You don't know what those words are.
And when you are exposed to that particular word, you would certainly come to know, what its meaning is. Newspapers में अक्सर word of the day use किया जाता है. So those word of the day is also a very good way of improving. If you are not exposed to such kind of activity, you can choose for yourself one word every day. It is not difficult. After a month, you would have a vocabulary of 30 words or 31 words that you have, taught yourself actually in 1 month, and that have improved your vocabulary as well. So this is how things go. And speaking fluently requires a lot of skills, so specific courses, learning programs will be of great help to you. Reading as much as you can, keeping an English dictionary, brush up your grammar, checking your spellings. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी टिप है, जैसे कि डुओलिंगो के बारे में हमने बात की, इसी तरह जब आप राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, प्रोफेशनल राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, तो जो डेफिनेटली आप सबको पता होगा, जस्ट रिपीटिंग अ फ्यू थिंग्स. You can also use the extension of Grammarly with your Microsoft Word. Microsoft Word itself has a language and grammar and spelling check, but it is not enough for professional writing. So you should download Grammarly. Most of the universities do have this login of Grammarly, which is paid to the universities, and you can also purchase it yourself. When Grammarly is installed in your computer, in your laptop, with your Microsoft Word or your extensions, so whenever you're writing an email on your Chrome using Gmail or whichever domain you use, or you're writing your research papers or articles or anything using Microsoft Word, so it gives you options to correct many things, correct grammar, correct vocabulary, and also it gives you suggestions that if you have written a sentence in this way, it would be better if you can write the sentence in a different way, and it will give you suggestions how you can mold and how you can modify your sentence. So Grammarly is an excellent tool if you have to master the art of writing professional English. So for writing professional English, I would recommend all of us using Grammarly. I use Grammarly. So there is a free version available, and then free version itself is quite helpful. If you want a complete version, so it is just you can pay and download it, or you can get it installed. So try to get someone to read what you have written and keep a diary in English as well. Now coming toward the practice part of our today's training, and I would request all of you to please participate, and so I can and we all can get an idea where do we stand when it comes to speaking English. Obviously we can only practice speaking English. We are not in front of each other, or we are not having a face-to-face communication that we can practice writing skills or listening skills even. So it's much better that we can only it's only possible that we can practice the speaking skills. So I have adopted this activity from the School of Life organization. The School of Life organization को अगर आप YouTube पे सर्च करें तो आपके पास बेतहाशा वीडियोस आ जाती हैं. School of Life is a university, is a school which started in London actually, and it has its branches in all across the world. And they are basically teaching the subjects which are directly connected to our life sciences, basically. Life in sense, emotions, our intelligence, our feelings and everything. And obviously it includes language. So, learning language also. So these activities that I'm going to share with you is published under Practicing English Through Digital Connections. And last week I was in Dubai. So, I got these from the School of Life organization, and I got these flashcards from the university. And I would like to share a few flashcards with you, just so you can get an idea, what they are actually doing. For example, the first activity they are sharing in a flashcard is that discuss your ambitions for the rest of your life. What do you want? What do you want a lot more of, and what do you want less of? You can even do these practices in classroom with your students also. अपने classroom में students में English fluency लेके आने के लिए, या उनको इंग्लिश प्रैक्टिस करवाने के लिए, बजाय कि हम उन्हें एक ऐसे लिखने के लिए दे दें, या हम उन्हें कहें कि आके अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो इंग्लिश में दे दो. Why not start off with these drills, these practices? They would love to participate in. Everyone loves to participate in this.
I would love to participate in such kind of activity drill where I can express myself. So please, any one of you, would you like to discuss? For you just have got 1 minute. I'm sorry, just 1 minute for each because we have many activities. So one of you would like to tell us about their ambition for the rest of life. What do you want to do a lot more of, and what do you want less of? Two things basically we are asking. You have 1 minute actually, and you can just talk about it in a few sentences. What you would like to say. So anyone who would like to participate? Yes, Anyone? can I? Please. Sarwar Khalik from Kent College. Yes, It please. seems to be very interesting, and it's really instigating even for us at this age level. What ambition in my life for the rest of life is that I would love to implement, I would love to apply all what I have learned, all what I have experienced through my uh, through the previous years of which are which are around 26 years of teaching. So I would like to share my knowledge, I would like to apply this, and I would like to do it in the use it in social services, and starting from my students, my colleagues, my friends, my help at home, and all those people. I would like to use that. I would like to make and I will. This is how I will get benefit myself from all what I have learned, what all I have absorbed in my life. And what I would like to do less is to be less rigid, to be less short-tempered, to be less strict, to be less. I would like to be more flexible. I would like to be more helpful. I would like to be more tolerant. So less मैं होंगी अपने temperaments and अपने जो होंगे tantrums. I would try to show them less, and I will relax more. Of course, this is how That's I will wonderful. relax myself. That's wonderful. Thank you so much. This is Thank what you I so feel much. I can do. Okay. Thank you so much. It was wonderful, actually. So moving on to the next activity and to the next participant. You have just been appointed leader of your respective countries. Briefly outline the 5 things you would immediately change or improve without obviously including any kind of politics. No politics in the training. So, we would just discuss, if you are given a chance of leadership of the country, what are a few things that you would like to implement? Uh, and you have got 1 minute to participate. So who would like to participate? Assalamualaikum, ma'am. Mr. Jafar would like to participate. Yes. Mr. Jafar. I would like to be the leader of Pakistan, or Prime Minister of Pakistan, and I would like to uh, spread Islam all over the world by my authority. Okay. And Assalamualaikum. If I am the Prime Minister of Pakistan, yes, I would like to spread Islam you would all like to over the spread world. all over the world. Thank you so much, Jafar sir. Anyone else would like to say something? Thank you, sir. Assalamualaikum, Dr. Shagupta from Rawalpindi Women University. If I am given the chance, I will go for the best of education, first of all, and the basic need like the pure water and the pure environment. इसके अलावा justice जो है वो मुल्क में और and the improvement of technology. Very nice. To go Thank you with so the much. word. Yeah, that's very nice, Dr. Shagupta. Thank you. And moving on to the next activity, explain the biggest national or international story currently in the news where you are, not the politics of Pakistan, Explain of course. the biggest national and international story currently in the news where you are discuss your Perspective in 2 lines. with others. Yeah. Biggest national international. I think we should better stick to international.
so we can have an idea how good we are with the current affairs and international relations. So any one of you would like to share Discuss your perspective international? in two lines with others. Yes, dear colleague. May I, ma'am? Yes, please. A new participant. Biggest national or international story currently in the news, where you are discuss your perspective in two lines with others. Sorry. जी, sorry. मैम ये माइक किसी का ऑन रह गया हुआ है May I, ma'am? जी, please. Ma'am, at present, the biggest international story is the Ukraine and Russia conflict. Actually, it's a Yeah. war. Yes. And Russia is invaded in Ukraine, and the reason is that Ukraine wanted to join, but Russia was opposing it. They tried it for the last 5-10 years to stop Ukraine to do so, but when they felt that it's not going to happen, they just attacked. And this is the biggest issue at present, which actually has shaken the whole world politically, economically, and international relations. True. And what's your perspective about it? What's your thinking? What's your opinion about this issue, of this international issue? Explain the biggest nation. Okay. I think he has disconnected. Anyone else would like to say something about your own personal opinion about the Ukraine and Russia war which is going on? Assalamu alaikum. Ji, Ji. War is not the solution of all problems. They should gather on their negotiation table and resolve their conflicts, because it will damage the whole world's peace. True. That's your perspective about it. Thank you. Moving on toward the next activity. So we don't have the sheets of paper here, so we will just do it orally. Following. Something you regret, something you want to forgive, something you long to share, an area you want to improve. So we will start with one person at a time. Something you regret in your life. A piece of paper and discuss something you regret. I think Miss Foster's mic is on. If you could kindly switch off your mic and thank you. Acha. So anyone would like to say anything? I regret. Can I share Yes, please. a poem written by me some years back? Yes, sure. Is it in English? So Yeah, ma'am. Yeah. Yes, sure. Please go ahead. Actually, it's about sea, Samandar. Yeah. Oh, wide, long blue sea. Oh, wide, long blue sea. Your depth, how can I see? You have hidden a lot of creatures, sponges, herbs, fishes, and creepers. Boats and ships are on their way. Charming birds come in season to stay. Rocky mountains and sandy shores. Tidal waves never make me bored. It's all about me. Very nice. Thank you for sharing your beautiful poetry with us. And yes, I can see a hand of Mr. Abdullah. Would you like to say something, Mr. Abdullah? Okay, maybe if not regret, something you want to forgive, something you long to share. Yes, Miss Shazia, would you like to say something? Assalamu alaikum. Ma'am, I think I don't have any regrets in my life. I think what happened, bad or right, it was good for me. I have idea that everything which happens in life is just good for us. I have seen that at the time when some bad incident happened, with the passage of time, it proved
it proved to me that it was good for me after some time. So I don't have any regrets. Right. And something I want to forgive, I like forgiving. I forgive everyone. That's I very think nice. That's I very don't kind of keep you. anything in my heart. I think that Allah is the forgiver. If we forgive others, then He shall forgive us. True. True. Thank That you is so my much. point of view. And Moving I on. want, Yes, please. okay. Assalamualaikum, madam. Ji walaikum salam. Assalamualaikum, madam. Ji walaikum salam. We can hear you, please. Hello. Ji, we can hear you. I am from Town College, Rawalpindi. I want to share with you that I want the people of Pakistan or all over the world people, Muslims. I want that they must get the English language proficiency along with the Arabic language. That is the need of our Muslims world. They should learn the Arabic language to read the Quran and Sunnah with its own spirit. It must be the policy of our government to introduce the Arabic language at least basic level. That should be the helpful for the people of Pakistan. Yeah, that's a very good suggestion actually. And at the same time, we should not limit Quran only to a language of Arabic. I think even if somebody wants to read the translation of Quran in English and they are better at understanding it in English, in Urdu, that's not a problem, I think. So it shouldn't be limited to language. The message should not be limited to language. But I do appreciate your concern. फरजाना बात कर रही हूँ. Thanks. Can I talk? Can I talk? Yes, please, Farzana. No regrets. I want to forgive every people, every person, I wanted to share my experiences of life, and I want to improve my writing skills. I want to write books. Now I don't have time, but I wanted to improve it, and I have no regret. But when you lose your dear ones, it is very painful. Regrets यही है कि it is a regret to travel in the time and to bring them back. Only this is the regret. Assalamualaikum. Yes, please. Ji, Dr. Nahid here. Yes, Dr. Nahid. First of all, thank you, Ms. Bakhtawar. A very impressive and a very wonderful lecture. I want to share an experience with you regarding my regarding English speaking. Basically, I'm a Persian teacher, a Persian language teacher, and once upon a time, I was talking to my colleague, and she was the English teacher, and I quote that, "Ma'am, once you suggest something, and I agreed with your suggestion." She snubbed me at the spot and said, "It's not suggestion, it's suggestion, and you focus your Persian language only. Don't speak English next time." So it was very shocking for me that I want to talk her to improve my English, but she was discouraging me. So I just want to share this experience at the time. That's actually the problem with the people and their mindset. I said earlier in the presentation that we should not confuse ourselves about the pronunciations, because pronunciations are so confusing these days. In American, you say schedule, and in British you say schedule. So schedule, we are confused between scheduling and scheduling. That's okay, perfectly fine. I mean, pronunciations are so different in today's world. Yes, but people discourage other persons to speak English or other languages because they think that they are they had the command or grip on
language, and no one can other learn or speak likewise. That's actually an inferiority complex many people have, and we Yes, should of not let course. that let us down. Anyhow, thank you So, for your impressive lecture. thank you so much. Thank you. I loved it. We have many other have ones as well. I'll be coming to the last one. You can get the copy of these. In the I have shared my last day's presentation as well, and you can get that copy from PHEC members. And this is the last one that take turns reading something to one another. Choose a favorite poem or passage from a book. When you have finished, discuss your thoughts on what you have read. This is a very a good way of improving. You can sit in a circle with your colleagues, with your friends. You can have a meeting once a week where like one of our colleagues recently, just in this meeting, she shared a poem with us. She could have shared that poem with us, and we could have discussed the content of the poem, that what she was trying to say, and we can communicate in English. So that's a very good way of expressing ourselves and talking to each other. So similarly, using physical or online dictionary, this is a very interesting one. That you have to come up with 3 unusual words that you can look up in a dictionary, and you have to devise a fourth one that you have invented yourself, and then you have to come in front of your classroom, or you have to come in front of your partners, and you have to ask them, and they have to identify the one word which is made up. The other 3 words are obviously unusual. Many people might not have heard about them. We have to pick up the unusual words, right? And then the fourth one that you have invented yourself, they have to identify that this is the word that she has invented or he has invented himself. This is again a very good practice of learning new words, learning new vocabulary. You can try this with yourself. You can try this with your colleagues. You can try this with your students. And this is how through these small activities they can learn. These are from digital connections, and these are practiced all over the world, all around the world. And they are very interesting. Similarly, look back over your life so far and name 3 major things you would have done differently. So all these practices are basically made for people to sit together, to talk, to discuss, to share, to write down. And ultimately, with all these drills and practices and daily life habits, change in our habits, we can definitely improve our English. We can have a very positive attitude toward our life. We are learning something daily. I do that, and I do hope that all of you have the same positive attitude toward our lives as well. I guess any feedback, if you would like to give in last 1 minute, you are more than welcome. Or if you would like to give any suggestion to me, you can share your suggestion also. And then we would conclude the meeting, conclude the training. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर ना तलबा जो हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में फेल हो जाते हैं अक्सरियत। जी। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें निसाब वजह बन रहा है या टीचिंग सबब बन रही है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है तलबा का, क्या वजह है? और सिलेबस से आप मुतमईन हैं? राइट। अभी देखिए रिसेंटली मैं भी काम कर रही थी, जो सिंगल नेशनल करिकुलम का एक हमारी गवर्नमेंट ने निकाला था कि सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए, लेकिन वो एक इट इज आई एम सॉरी टू से बट एक मजाक सा बन गया कि पहले एक दफ़ा किताबें लिखी गई, फिर उन सारी किताबों को फिर वापस कीजिए, दे आर बिलो स्टैंडर्ड. So what they are trying to implement a single national curriculum problem, because obviously there is a huge gap between private school student and government school student. नॉर्मली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटीज में तो फिर ये होता है कि प्राइवेट स्कूल सेक्टर भी आ रहा है और गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर भी आ रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स आर गोइंग देयर, एंड बिकॉज ऑफ वीक फाउंडेशंस उसमें आपने कहा कि निसाब, डेफिनेटली यस, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द करिकुलम. आपने कहा टीचिंग, यस, वी नीड टू ट्रेन आवर स्कूल टीचर्स, we need to give rigorous training to our school teachers for teaching English. Only a degree in English is not enough. Again, and speaking fluently, having a grip on your grammar, vocabulary, a teacher has to impress. He or she has to influence the teacher. Until unless you can't impress your class, until unless you can't impress your students with your personality, the way you talk, the way you speak, the way you have confidence, you cannot motivate them to learn actually. And this is applicable in universities, this is applicable in colleges and schools. So
if you are asking about me, yes, there needs a lot of improvement, and I can understand the difficulties all of you are facing in college sector, where most of the students actually fail in English. And suddenly एक कोई magic wand तो नहीं हो सकती कॉलेज में बच्चे जो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए या उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए. It has to start from the very basic level, which we lack unfortunately. So that's all. That we conclude the session here. Thank you so much everyone for joining in today and for participating. You guys, all of you were wonderful, and I actually learned a lot from all of you, from your experiences, and hope inshallah we'll see you someday again in some training session. Bilal sir, we have concluded the meeting. Thank you so much. Thank you, ma'am. Wonderful session. Thank you. Thank you. Session, and he first hesitated slightly, but after getting to know that, after knowing that this session is the last one of the training, last one of this training, he agreed, and right now he is with us. I'm really thankful to him. Dr. Saab, thank you very much, sir, for joining. Thank you very much. Sir, over to you. This session is about time management, and I hope that you will share with our participants that what time management is and how the time can be utilized effectively. Thank you. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. Thank you very much जी, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? कल भी आपके साथ एक सेशन हुआ था हमारा. आई थिंक ये वही सेम ग्रुप है आप लोगों का. कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जी. तो आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज आपका लास्ट डे है, कंक्लूडिंग सेशन है आई थिंक. तो आई होप कि ये सब ठीक रहा होगा अब तक. चले माशाल्लाह. अच्छा जी, मैंने अपनी कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर की हैं. क्या वो आपको सामने शो हो रही है? Yes, showing. Yes, sir, visible है. Okay. Just before I move on to today's session, what was the best thing that we learned yesterday? Just one or two feedback from anyone. What was the best thing that you gained from yesterday's session? Was there anything good or anything useful for you? Very interesting, sir, about conflict, about the meaning of the conflict, and a real destination of the conflict. Yes, और what was the main thing कि conflict को अगर आपने solve करना है तो उसमें वो जो central point था वो क्या था भला? Compromise. वो था, मैं जो समझा हूँ सर, वो तो settlement है. Settlement between two groups and between two. और जो after the और जो conflict के हमने you will जो settle one thing. और जो हाँ, ये ज़किया बानो इन्होंने मेंशन किया, और आई थिंक दैट इज द की पॉइंट. चैट में उनका मैसेज आया कि whenever you are going to resolve the conflict, you need to understand the need, your need and the need of the other person. Once you realize the need, then yes, you are in a position to actually go and resolve it. That is the first thing. Of course, उसके अलावा मतलब बाकी फैक्टर्स भी हैं कि उसके अंदर हमने जब नेगोशिएशन में जाना है तो हमारा फोकस क्या होना है. बट आई एम ग्लैड कि यू ऑल रिमेंबर इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक. और अब अगेन वही कल की तरह के रूल्स जो हमने कल सेट किए थे, वो ये कि माइक आप ऑफ रखेंगे जब तक आप बोलेंगे. जब आपने बोलना होगा तो माइक उस वक्त ऑन किया जाएगा, वरना माइक ऑफ रखेंगे अपने तमाम के तमाम लोग. तो आप अपने माइक्स जो हैं वो ऑफ कर दें. सिर्फ जब आपने बात करनी है उस टाइम हाथ से प्रेस करके ऑन किया, बात करके फौरन उसको ऑफ कर देना है. अगर यूं करेंगे तो फिर हमारा सेशन इफेक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा, हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे. लेकिन अगर दरमियान में ये बैरियर्स आते रहे कम्युनिकेशन के और ये नॉइज़ आता रहा और दरमियान में इस तरह की कोई इंटरप्शंस होती रही, तो फिर हमारा जो आज के जो गोल्स हैं ना वो हम शायद अचीव ना कर सकें. ठीक है जी. सो दैट्स डन. अच्छा, अब बैक टू द टाइम मैनेजमेंट. पहला सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एज यूजुअल कल की तरह की हमारी अप्रोच होगी, पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी, जिसमें कोशिश होगी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें. आपके सामने एक सवाल है. Can you read it? अब इसका जो है ना, कई लोग मुझे जवाब देंगे कि भाई हम सुबह उठ के वॉक करने जाते हैं. कई लोग जवाब देते हैं हम नमाज पढ़ते हैं. लेकिन वॉक नमाज भी बाद में है. अभी आप बेड में हैं, आपकी आंख खुली. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? हम अपनी आँख ओपन करते हैं. आईज ओपन करते हैं. एंड सो आईज ओपन का मतलब ये है कि नो यू गॉट अप.
When you open your eyes, this means you have got. अच्छा ये टाइम देखते हैं. Okay, टाइम देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. One by one, please, one by one. ठीक है. So when we get up, we decide what we have to do throughout the day. Okay. Make a plan in our. क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? Aisha from Model Town College. जी मैडम. आप क्या देखते हैं? What are the things you have to do? What are the things we have to do throughout the day? We make a plan, Okay, a rough fair plan enough. in You our make a mind. plan. Okay, you make a plan. Okay. कोई और? Yes. Assalamu alaikum. Can I add? Sure. I wake up by counting all those things which were done unleft last night or yesterday. Yesterday's So things. most often we are so busy that all the time things are, I mean, moving around and they are in Okay. our mind. And So I feel like you that. go for the yesterday's pending things which Yes. you have left incomplete yesterday. Okay, fair enough. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. मैं उठते ही अपना मोबाइल देखती हूँ. मोबाइल देखते हैं. Thank you very much. Very honest and fair answer. Okay. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ते हैं. Fair enough. और उसके बाद? सर सबसे पहले उठ के तो मैं जो है अलार्म अपना बंद करता हूँ और फिर अपना शेड्यूल जो टाइम है उसको स्पेंड करना शुरू कर देता हूँ. स्पेंड कैसे, मतलब पहली चीज क्या करते हैं फिर जब स्पेंड करने लगते हैं? मतलब मोबाइल देखते हैं, उठ के बिस्तर बनाते हैं? जी आपने जी अलार्म बंद किया, फिर अपने नमाज वगैरह का सिलसिला, फिर वॉक पे चले गए. ओके, फेयर इनफ, ठीक हो गया. कोई और इसमें एक पार्टिसिपेंट और को बता दें कोई इसमें? मैं दाऊद बात कर रहा हूँ. मैं सर जैसे ही आंख खुलती है सोचता हूँ कि भाई उठ जाऊं या दोबारा सो जाऊं. ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ. और फिर जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपने उठना है तो देन व्हाट डू यू डू? फिर प्लान करता हूँ कि अब उठ के क्या करना है. So you plan the day what to do. Okay, fair enough. So हमारे पास मुख्तलिफ चीजें आई हैं जिसमें से सुबह उठ के सबसे पहली चीज उठने की दुआ पढ़नी, उसके बाद इसी तरह से मोबाइल फोन देखना, आज की कौन सी चीजें करनी है ये एक ऑप्शन आया. इसके बाद एक ये ऑप्शन आया कि जी कल की जो पेंडिंग इनकम्प्लीट चीजें थी उनको देखा और आगे फ्यूचर के प्लान्स बनाए. तो ये तो कुछ चीजें आप लोगों ने अभी शेयर की मेरे साथ. अब अगला सवाल है मेरा, what is the last thing that you do when you sleep, get to bed? सर अगले दिन का प्लान करते हैं अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम. ओके, दुआ पढ़ ली आपने, फेयर इनफ. और इसके बाद एक दुआ और भी होती है सोने की. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया. जी ओके, फेयर इनफ. हाँ जी वालेकुम सलाम. जी मैडम. जी सर, दुआएं पढ़ के और फिर जब तक नींद नहीं आती तो आई रिव्यू माय डे व्हिच आई स्पेंट के मैंने उसमें जो है वो क्या अचीव किया और कौन सा काम अकम्प्लिश हुआ, कौन सा नहीं हुआ, और व्हाट बेटर कैन आई प्लान फॉर टुमारो. और उसके बाद अल्लाह से कुछ देर बातें की एंड देन आई गो टू स्लीप. माशाल्लाह, वेरी गुड. जी कोई और? सर ये नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं कि अगले दिन पूरा दिन कैसे गुजरना है. कितनी आइडियल सिचुएशन आप लोग बता रहे हैं मुझे, कितने आइडियल सिनेरियो बता रहे हैं कि जब आप सोते हैं तो आप नेक्स्ट डे का प्लान करके सोते हैं. एक्सीलेंट, बहुत ही आइडियल सिनेरियो बता रहे हैं मुझे आप. आई विश कि हम सारे अगर ऐसा करें तो फिर तुम्हारे बड़े मसाइल हल हो जाए. सर कैन आई ऐड? सर मेरा जी प्लीज प्लीज. जी प्लीज सर नमाज पढ़ के और of course नमाज वगैरह भी पढ़ के. And from last many years, I mean, I'm busy with my PhD studies and defense is about to be. मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ. So many challenges, and I sneak. Really, I sneak. I don't plan to sleep. Like I just sneak. Okay, fair enough. There are so many tensions being a working woman, like the maid will come or not. तो फिर मैं यही कोशिश करती हूँ वो कुछ भी ना सोचूं. Okay, fair enough. So, okay, fair enough. Fair enough. Honest, बिल्कुल honest answer. Yes. जी वालेकुम सलाम. जी मैडम आप पहले बताइए, फिर जो सर बात कर रहे थे ये कर लेंगे.
As I said, I start Mehdi, the day with mobile. I stop my day with mobile. Okay, start the day with the mobile and stop the day with mobile. Okay, fair enough. ठीक है, very good. जी. सर रात ये प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग सर ये हम रात को करते हैं. Okay, और सुबह उस हिसाब से हम उठते हैं और मैं पहला काम ये करता हूँ कि मैं खिड़की से जानकर मौसम का पता लगाता हूँ. ओके, और अब मोबाइल से नहीं पता करते, गूगल भाई साहब से नहीं पूछते कि आज का मौसम कैसा होगा, आप खिड़की को देख के अंदाजा लगाते हैं. ठीक हो गया? ओके, फेयर इनफ, ठीक है जी. सर मेरा ख्याल तो ये है कि अगर हम सोना शुरू कर रहे हैं तो सोने की कोशिश करें, क्योंकि अगर प्लानिंग में या दूसरी चीजों को आप याद करने क्या बैठ करना जाएंगे ना, चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. लेकिन जो मैं अभी सवाल जो पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि करते क्या है ना, अब करना क्या चाहिए वो तो कोशिश होती है कि सो जाए जी. जो हमने करना क्या है वो हम इंशाल्लाह आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. लेकिन कोशिश जो आप होती है करते कि हैं, सो जाए. हाँ चले, वो तो ऑफ कोर्स वो हमारी इंटेंशन. जी मैडम प्लीज. हाँ जी, मैं सोने से पहले कुछ देर पढ़ती हूँ या मोबाइल देखती हूँ या फिर ये अखबार पढ़ ली, कोई बुक पढ़ ली, क्योंकि मेरी हर महीने बुक्स आती हैं तो अनरेड पड़ी रह जाती हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें से पढ़ ली. अपने सराहने हर वक्त किताबें होती हैं. माशाल्लाह, वेरी गुड. चलें जी, अब ये डिफरेंट हमें पैटर्न मिल रहे हैं. देखिए जी मैडम, ये बस लास्ट कमेंट होगा आपका, उसके बाद मैं फिर आगे अपनी बात कंटिन्यू करूंगा. जी मैडम बताइए. सर मैं सोने से पहले जो है वो अपना एहतसाब करती हूँ, सोचती हूँ कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी पूरे डे में और मेरी क्वालिटीज क्या थी, तो मैं उनको जो है शॉर्ट कमिंग्स को खत्म करने के लिए अपने ज़हन में प्लान बनाती हूँ कि मैंने नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या करना है और अपनी क्वालिटीज को भी इम्प्रूव करने के लिए सोचती हूँ. ठीक है. अच्छा चलें जी, अब ये हो गया कि जी आपने अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे ऑब्जर्व किया. जी नाउ आई हैव टू मूव ऑन. अब दो बातें की हमने, दो बातें मैंने आपसे पूछी. जी मैडम आप वेट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा. हमने दो बातें बेसिकली आप लोगों से पूछी थी. एक सवाल आपसे ये पूछा था कि जी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, एंड दूसरा सवाल ये पूछा था कि व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू डू व्हेन यू स्लीप. अच्छा, अब ये दोनों चीजें जो है ना, दीज टू थिंग्स डिफाइन how you manage your time. These are the two key things that define how you manage your time. और अगर हम इन दो चीजों पे अगर हमने अपने आप को मैनेज कर लिया ना, द मोमेंट, दिस इज माय आर्गुमेंट, आप लोग यू माइट डिसएग्री विद मी, लेकिन दिस इज एन आर्गुमेंट कि व्हेन यू मैनेज दीज टू थिंग्स देन यू सेट द टोन ऑफ योर डे. अगर रात को आपने किस तरह से आपने जो लास्ट थिंग आपने जो की उसके मुताबिक आपने, यू आर बेसिकली सेटिंग द टोन फॉर द नेक्स्ट डे. Or the first thing that you do in the morning, that helps you to set the tone of the same day. How you manage it. अब होता क्या है हमारे यहाँ इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, वो अक्सर औकात जब मैं सुबह उठ के अगर मैं मोबाइल देखूं तो मेरी आंख खुलने से पहले मेरे मोबाइल पे कोई 20, 25, 50 मैसेजेस आए हुए होंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मैसेज आए हुए होंगे, कहीं सुबह बखैर, कहीं पे कोई कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वाकयात और नसीहतें और लेक्चर्स और पता नहीं क्या 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 बहुत कुछ लिखा हुआ होगा. अब ये चीज़ें एज के साथ चेंज होती हैं. मतलब देयर आर पीपल हु would really have time to go through all the contents, watch them and see them and comment and talk about them. But then there are people who have their own things to do. For instance, in my case, I have my own list of things that I need to complete. So if I don't go for the things that I have to complete and go for the content that has been forwarded to me by different people, so that content is literally going to ruin my day. Because अगर तो मैं देखें, या तो वो कंटेंट मुझे डिफाइन करे कि मुझे कैसे चलना है, या मुझे डिसाइड करना है कि मुझे अपना रास्ता क्या बनाना है. तो वो जो चीज़ें जो अनवांटेड किस्म की चीज़ें, जो अनइंटेंडेड किस्म की चीज़ें हैं, वो मेरे मोबाइल के ऊपर वो नॉन स्टॉप आई जा रही हैं. इसके ऊपर अभी हमने आगे जाके भी बात करनी है. तो उनकी बेसिस के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारी एक्सक्यूज में क्रिएटिव चीज़ें जो हम करना चाह रहे होते हैं ना, समटाइम्स वो हमारी क्रिएटिव चीज़ें वहाँ से रुकना शुरू हो जाती हैं. अब सवाल ये है कि क्या हम किस तरह से ऐसा मैनेज करेंगे, हम ऐसा क्या चीज़ करेंगे जिसकी वजह से जो है ना हम अपने मामलात को थोड़ा सा को बेहतर करना शुरू हो जाएं. अब
एक सवाल मैंने यहाँ पे कुछ रखे हुए थे, वो सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा क्योंकि आई हैव गॉट सम बेसिक आइडिया हाउ मेनी पीपल प्लान 1 वीक एट अ टाइम, टू डू लिस्ट उसको मुकम्मल करना, इंटरप्शन, सेट ऑफ गोल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपसे नहीं पूछ रहा क्योंकि आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गॉट द आइडिया इन द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि आई फाउंड एक नेट के ऊपर एक पोस्ट मुझे मिली थी एक ज़माने में जहाँ पे ना वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर ना किसी ने, कोई मुझे नहीं पता कि इनके ऑथर कौन थे, बट दिस वाज समथिंग वेरी यूजफुल एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड इट कि वैल्यू ऑफ टाइम जो है ना वो कितने लोग कैसे रियलाइज कर सकते हैं, हाउ डू यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम। उसके लिए मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सिचुएशंस का बताया गया कि अगर आपने एक साल की वैल्यू को पूछना है तो फिर आप उस स्टूडेंट से पूछें जो कि फेल हो चुका है, एक महीने का देखना है तो एक मदर से पूछें हो गिव बर्थ टू प्रीमेच्योर बेबी, एक 1 वीक की अगर आपने वैल्यू समझनी है तो आस्क एडिटर ऑफ ए वीकली न्यूज़पेपर हाउ इंपॉर्टेंट 1 वीक इज, 1 आवर कैसे करना है तो आस्क द पर्सन हु इज ट्रेन लेफ्ट एन आवर गो। इस तरह से ये मुख्तलिफ, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी लाइफ के अंदर जो एक एक सेकंड है, एक मिली सेकंड है, एक घंटा है, एक वीक है, एक मंथ है, एक ईयर है, उसकी बड़ी वैल्यू है। आखिरी बात जो इसमें लिखी हुई है कि टाइम हैज वैल्यू ग्रेटर देन एनी करेंसी, वी मे लीव आवर चिल्ड्रन द मनी वी डोंट यूज इन आवर ओन लाइफ टाइम बट वी कैन नॉट लीव देम 1 मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम। ये उसका हिस्सा नहीं है जो ऊपर लिखा हुआ था, ये एक अलग कोट है इसके साथ। ये बात जो लास्ट बात की, इसको कोई बंदा रिपीट कर सकता है? एनी पार्टिसिपेंट? कैन आई सर? जी प्लीज। टाइम की अहमियत बहुत ज्यादा है और पैसा तो हाथ का मैल है। ओके, इसमें उसने पैसे को टाइम को आपस में कंपेयर किया है। एक तरफ आपके पास टाइम है, एक तरफ आपके पास पैसा है, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू मैक मैंसीनी द वैल्यू ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ करेंसी और पैसा। वो कहते हैं कि जी करेंसी और ये सारी चीज़ें इतनी ऐसी, इसकी ये वैल्यू है कि आप ये छोड़ के जाना चाहें तो आप छोड़ के चले जाएंगे, आपके बच्चों को मिल जाएगी, लेकिन जो टाइम है ना वो आप कभी छोड़ के नहीं जा सकते पीछे से कि जी टाइम छोड़ जाएं। अब दिस पर्टिकुलर कोट, ये जो लास्ट बात की है, दैट रिलेट्स टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अब उस जो मैं एक छोटी सी एग्जांपल एक पहले मैं आपको ये देना चाहता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि आप लोगों के पास ना कोई एक ऐसा बैंक आपको मिल गया, यू गॉट अ बैंक, और उस बैंक की खास बात यह है कि जिस बैंक के अंदर आपका एक अकाउंट है और उस अकाउंट के अंदर खास बात पता है क्या है, आपको रोजाना 86,400 रुपए हर रोज मिलते हैं आपको, ठीक है। और हर रोजाना वो 86,400 रुपए आपकी इस कंडीशन पे मिल रहे हैं कि आपने रात को 12 बजे तक खर्च कर लेना है। अगर आपने खर्च करें तो वो आपके हुए, खर्च नहीं भी करेंगे तो जैसे ही रात के 12 बजेंगे वो पैसे खत्म हो गए, वॉश, एक सिंगल पेनी भी आपके अकाउंट में नहीं बचेगी। उसके बाद अगले दिन के लिए फिर 86,400 आपको मिलेंगे, और जितने अरसे तक आप जिंदा हैं हर रोज आपको 86,400 मिलेगा। अब आप लोग क्या करेंगे उसका? अगर आप इस सिचुएशन से गुजरते हैं तो व्हाट विल यू डू? 86,400 डेली सेकंड से इन आवर लाइफ सर, वी मस्ट बी सेव आवर टाइम देन आवर करेंसी। नहीं, मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको यही कैश के तौर पे मिल रहा होता तो आप क्या करते? हम फिलहाल टाइम को करेंसी में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। हमने ये एस्टेब्लिश किया कि जो टाइम है दैट हैज हायर वैल्यू देन करेंसी, बट राइट नाउ समथिंग व्हिच इज ऑफ लोअर वैल्यू, वी आर इमेजिनिंग इट कि वी गॉट दिस मच मनी एवरी डे इन आवर बैंक with the condition that the money will wash away exactly at midnight every day, and then you get the same amount of money the very next day. जी सर, पूरी कोशिश होगी कि ये एक पेनी भी इसमें से हम छोड़े नहीं, उसको सारे को स्पेंड अगर आप करें। उस 86,400 में से अगर आपने 10,000 भी छोड़ दिए ना, 15,000 भी आपने छोड़ दिए जो यूज नहीं किया ना, तो आपको दुख होगा कि यार ये अमाउंट जाया हो गई। ये माइक बिल्कुल ऐसे ही ऑन सर। है, माइक सिर्फ उससे ऑन करें जब आपने बात करनी है, वरना ऑफ रखें तमाम लोग। ये पीछे से देखें शोर आ रहा है, ठीक है। अब उसमें ना कई अभी भी शोर आ रहा है, ये हॉर्न का और ये सारा। प्लीज अपने माइक्स का ध्यान रखें, माइक्स पे तवज्जो रखें। आपके माइक्स ऑफ नहीं होने चाहिए, ऑन नहीं होने चाहिए अनलेस यू स्पीक।
अच्छा, अब क्या हो रहा है कि 86,400 को हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो, और अगर हम उसको खर्च नहीं करेंगे तो डेली बेसिस पे एक पछतावा होना शुरू हो जाएगा। अपने आप को ना विजुअलाइज करें इस बात को कि यार डेली अगर मुझे इतनी करेंसी मिल रही है, हर रोज मिल रही है, और आप अगर उसको नहीं खर्च करेंगे ना, तो जितने पैसे आप खर्च नहीं करते रहेंगे ना, उतनी आपको रोजाना की बेसिस पे तकलीफ होगी कि आज मेरे इतने पैसे हाथ से चले गए, आज इतने पैसे हाथ से चले गए, बिकॉज यू विल रियलाइज इट कि इट वाज अ करेंसी, इट वाज समथिंग वर्थ। लेकिन हो क्या रहा है, पैसे की जो वैल्यू है ना वो हमें नजर आ रही है, हालांकि उससे ज्यादा जो वैल्यू है, पैसे से ज्यादा वक्त की वैल्यू है। और वो जो वक्त है वो हमारे पास डेली का 86,400 सेकंड्स है, जैसे हमारे कोलीग ने भी मेंशन किया। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स दैट वी गेट इन 24 आवर्स टाइम। बट अब यहाँ पे जो समझदार बंदा होगा ना, जिसको ये मिल रहा होगा, वो पता है क्या करेगा? वो सिर्फ खर्च नहीं करेगा उन पैसों को, उसके पास जब पैसे उसको डेली 86,400 उस बंदे बंदी को मिल रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे? वो उन पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं। यू नो व्हाट आई मीन? वो उस पैसे को खर्च भी अगर वो कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश उनकी ये होगी कि हम रोजाना की बेसिस के ऊपर इस पैसे को इन्वेस्ट करते जाए, ताकि कल को यही पैसा हमारे काम आ जाए। Same applies to the time that you got 86,400 seconds every day. Now you have it, either you consume it, or you invest it, or you do nothing. In any case, the money will go. This 86,400 will change, will end by the end of the day, and then अगले दिन के लिए आपको फिर नया मिल जाएगा। तो जब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, चीज को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि हमारा जो एक एक सेकंड है ना, हमारा जो एक एक मिनट, एक एक सेकंड है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात करने का मकसद क्या है कि इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हमारी ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है और कितनी इंपॉर्टेंट है। एकदम हमें ये पता लग गया कि कितनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम उसको मैनेज करना आसान होगा हमारे लिए। अब इस इंपॉर्टेंट चीज को, जिसकी वैल्यू को हम रियलाइज करते हैं कि ये इतना अहम है, इतना इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्यों नहीं यूज कर पाते, या हम चाहते हैं कि हम उसको यूज करें, हम चाहते हैं कि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें, लेकिन उसके बावजूद what are the key things that actually do not let us consume our time in an effective manner? मतलब अब मैं इनमें दो तरह के हैं, एक वो लोग हैं जो कि यूज करना ही नहीं चाह रहे, दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेंशन ही नहीं बनाई, उनको भी टाइम का अंदाजा नहीं है, एहसास नहीं है। मैं उस पब्लिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिनकी इंटेंशंस हैं कि वो अपने टाइम का बेहतरीन यूज करें, जिनकी ख्वाहिश है कि वो उसको इस तरह इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर पाते। तो व्हाट डू यू थिंक इज द फैक्टर, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? Sir, procrastination. Keep on delaying, keep on delaying. अरे यार, थोड़ा अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन, चले प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी आते हैं, ठीक है, दैट इज वन रीजन, हम विल गेट बैक टू प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं बताऊं? जी सर। This is what I do. ये Keep है on कि हम जानते नहीं है या जानने की कोशिश ही नहीं करते कि इसको हम कैसे इन्वेस्ट करें या कैसे स्पेंड करें, कैसे हमें करना चाहिए, तरीके नहीं हमें आते। ठीक है, हमें मेथड सर, नहीं आते। सर मैं भी lack of management, lack of management, lack of knowledge. लैक ऑफ नॉलेज, किस चीज का नॉलेज की कमी है? वक्त की वक्त। जी मैडम, एक सेकंड with the lack of decision power, lack of Sir, can I add something, sir, please? जी मैडम, सर मैं ये बताना, मेरा ये ख्याल है कि हम उसको टाइम को, आपने वैसे बहुत अच्छी मिसाल दी है, हम उस टाइम को इस तरह से करेंगे कि हमने उसको इन्वेस्ट भी करना है उस टाइम को, ताकि एक तो जो समझदार लोग हैं, कैसे हम अपने बच्चों को वो टाइम देंगे, जब हम बच्चों पे उसको इन्वेस्ट करेंगे तो वो बच्चे आइंदा हमारे लिए कुछ ना कुछ जो करते हैं। दूसरा, हम उस टाइम को नेकी के, और उसके बाद सर हम उसको नेकी के कामों पे खर्च करेंगे, नेकी भी पलट के आती है, और इसके अलावा सर हम मजीद उस टाइम को, और वो पलट के एक तो दुनिया में ही आती है और दूसरा आखिरत में भी हमें उसका वो मिलेगा। So you use it and you invest it. So you use it and you invest it, right? जी सर, खर्च भी करेंगे, अपने ऊपर भी करेंगे, हम एक्सरसाइज करें, खाना खाएं, ये करें, लेकिन हम उसको जब हम नमाज पढ़ेंगे, नेकी के कामों में खर्च करेंगे, बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे, तो ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को। और सर हम तो, मैं तो ऐसे ही करती रही हूँ अपनी फैमिली में, अब तक हम लोगों ने ऐसे ही किया है।
तो सर वो पलट के वही वाली चीजें जो है वो हमारे पास आती हैं और अब इतनी जिंदगी गुजार के सर उन बच्चों को मैं देखती हूँ जिनको हमने टाइम दिया है, हम पैसे के पीछे नहीं भागे थे, हमने अपने मियाँ बीवी ने बच्चों को टाइम दिया था। बच्चे माशाल्लाह से दुनिया तारीफ करती है सर कि वो हमारा कैसे ख्याल रख रहे हैं। सर जो आप और चीजों पे खर्च करते हैं टाइम नेकी के कामों में, उसके लिए अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आखिरत में उसका अजर देंगे, तो ये हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल जो मेरा है ना, जो मेरा सवाल, थैंक यू फॉर द इनपुट। मेरा सवाल जो इसके अंदर है वो ये है कि हम अब वो लोग जो कि चाहते हैं कि करें, रुकावट क्या बनती है आजकल के दौर में? ये आजकल के दौर में जो सबसे बड़ी रुकावट है, जिसके ऊपर मैं अभी थोड़े पहले बात मैंने आपसे कही थी कि मैं आके करूंगा, वो ये है, ये आपके सामने स्क्रीन पे, डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक चीज आपको एक तरफ लेके आप जाना उस तरफ चाह रहे हैं, वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपको किसी और तरफ लेके जा रही है। आपने अपना एक गोल सेट किया, आप उसकी तरफ करने जा रहे हैं, अचानक एक और डिस्ट्रैक्शन आई है, वो उठा के आपको कहीं और ले गई। मतलब इट्स लाइक यू आर रनिंग टू वन डायरेक्शन एंड देन देयर आर थिंग्स दैट कीप पुशिंग यू फ्रॉम द डायरेक्शन वेयर यू वांट टू गो. They keep pushing you to different side. So no, there is one thing, there is somebody who does not want to do anything, who does not want to make effective use of his or her time. That is one scenario. The other scenario is there is somebody who is willing to use his or her time and invest it. But the thing is, there are distractions which are causing this problem, which are affecting his or her routine and their वो जो to-do list. अब ये distractions जो होती है ना, ये कौन सी distractions हैं? I've divided them into two main categories. One is one are the internal distractions and others are external distractions. Internal distractions कौन सी distractions होती हैं? सर हमारी अपनी एक तो मैनेजमेंट की कमी है, दूसरा हमारा विल पावर है कि हम पहले अच्छा स्ट्रॉन्ग फैसला करें और फिर उसके ऊपर जम जाएं। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी इसके ऊपर बताएं कि डिस्ट्रैक्शन से क्या मुराद क्या है। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग द मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग के डिस्ट्रैक्शंस किसको समझते हैं कि क्या डिस्ट्रैक्शन है, और अगर उसमें अगर मैं कहूँ कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, तो क्या लगता है कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कौन सी होती हैं जो घर के अंदर हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीजें, या हमें कहीं हमारे ऑफिस के अंदर कर रही हैं, वो इंटरनल है, या वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से मुराद कुछ और है? ये मिजाज में भी कुछ शामिल होता है। कुछ लोग फितरी तौर पे सुस्त होते हैं और ये जी ज्यादातर हमारी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होती है, हमें काम कर रहे होते हैं और कुछ और सोचने एक वक्त में अगर एक पार्टिसिपेंट बात करेंगे तो आसानी से समझ आएगी, अगर 2-3 पार्टिसिपेंट बात करेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। सो 1 person at a time प्लीज। जी सर जी मैडम बताइए। जी वालेकुम सलाम। ये इंटरनल डिस्ट्रक्शंस ये हमारे माइंड में, हमारे जहन में होती हैं। हमारा दिमाग बाजू का टू बी और टू नॉट टू बी के बारे में सोचता रहता है कि मैं ये करूं या ना करूं, क्या इसमें मुझे कितना एडवांटेज होगा नहीं होगा। समटाइम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जहन में ये ख्यालात आ जाते हैं कि मैंने अगर इस तरह से इन्वेस्ट की अपने इनकम या ये चीज़, तो ये पता नहीं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त हो या ना हो, मैं ये ऐसा करूं तो क्या होगा, मुझे करना चाहिए, कोई लॉस ना हो। ये तो आप वैसे रूटीन में जो लाइफ डिसीजंस कर रहे हैं ना उनके हैं। जी मैडम बताइए। जी कैन आई गिव माय ओपिनियन? श्योर वेट जिन्होंने भी सवाल जिन्होंने पूछा है कि भी वो पहले वो बता दें, उसके बाद। जी सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे आई थिंक सो कि डिस्ट्रैक्शंस में हमारे जो इंटरनल है मूड स्विंग भी होते हैं। हम अपने मूड की तरफ चले जाते हैं और जो हमारी हमने प्रायोरिटाइज किया करना चाहिए जिन चीजों को, उनको हम नहीं करते। तो मेरा यही जी एक और मैडम जो पूछ रही थी अभी। जी सर। जी नहीं सर, एक सेकंड वेट कीजिएगा सर, वेट कीजिएगा आप। Okay, sir. I think it's our mindset as well, and our own understanding of things, which engage us in so many distractions, and we cannot take decision, and we cannot manage our time. So this is how we waste our time, and lack of management, lack of planning, lack of understanding, lack of clarity.
about यहाँ पे things. ये देखिए ये भी इंटरनल हैं सारी. हाँ, जी. ये मैं डिफरेंट वो कर रहा हूँ. अभी एक मैडम थी जो बार बार पूछ रही थी कैन आई स्पीक, और वो अभी तक नहीं बोली हैं. मैं चाह रहा हूँ कि वो जी बात करें. सर मैं बात करना चाह रही हूँ. जी प्लीज. सर इनफैक्ट मेंटल डिस्ट्रैक्शंस क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है. प्रेजेंटली हम कुछ कर रहे हैं और उसके साथ पैरेलल में वी कैन नॉट स्टॉप द थिंकिंग प्रोसेस और वो चल रहा होता है. तो उसमें सर दो तरह की चीजें होती हैं, सम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड सम फियर्स अबाउट द फ्यूचर. तो वो भी उन्होंने हमें साथ साथ कैप्चर किया हुआ होता है. तो बाज़ औक़ात वो जो चीजें होती हैं वो हमारे प्रेजेंट में जो हमारा टास्क ऑन द हैंड जो हमें करना है उसके ऊपर से हमारी तवज्जो हटा रही होती. Perfect. तो Thank you very much. जिसको कहना चाहिए कि फोकस खराब कर रहे होते हैं. जी, और ये अभी एक सर जिनको मैंने रोका था कि आप एक सेकंड वेट कीजिएगा. जिन टीचर को मैंने भी रोका था, जिन मेल टीचर को मैंने भी कहा था कि मैं आप एक सेकंड रुकेंगे. आई वांट हिम टू स्पीक प्लीज. सर मेरी अर्ज ये है कि जो मुझे लग रहा है कि लेट्स सपोज, अब मैं एग्जांपल से ही बताऊंगा कि हमारे फर्ज के 2 बच्चे हैं और एक चाहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ और हमारी विश होती है कि हमारे इसके कजन डॉक्टर हैं तो बस हम हर हाल में ही इसे डॉक्टर बनाएंगे. ठीक है. तो मेरे ख्याल से इसे इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कह सकते हैं. अच्छा चले, मैं इनको थोड़ा सा वो करता हूँ क्योंकि ना मैडम वेट I'll get back to you later. Because I need to establish a point here. देखिए आप लोगों ने मुख्तलिफ बातें की. इंजीनियर बनना है मगर हमारी कोशिश हम उस पे जी I got it. इसमें देखिए मैं एक चीज मैं आपको इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन में, क्योंकि होता क्या है हम अपनी जो गुफ्तगू अभी हम कर रहे हैं ना, इस गुफ्तगू के अंदर भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं. और इस गुफ्तगू के अंदर डिस्ट्रैक्शन इस तरह से आती हैं. देखिए एक चीज जो हम यहाँ पे समझना जरूरी है ना, कल के सेशन के अंदर एक चीज जो हम बार बार चाह रहे थे कि हम सीखें और हम उसमें करें, वो लिसनिंग स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट थी. और लिसनिंग में कि जब आप देखें, जब हम सवाल जो इसमें हम कर रहे हैं, जो सवाल है वो सवाल ये है कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं. जो आंसर होता है वो उससे टोटली डिफरेंट होता है. मेजॉरिटी लोगों ने जो आंसर्स दिए वो एग्जैक्टली वो आंसर नहीं थे जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था. सवाल का जवाब नहीं था मेजॉरिटी ने, कई लोगों ने दोस्त जवाब भी दिए. तो आप लोगों को यू हैव टू मेक योर मतलब try to focus on what is being asked and then answer exactly the question that is being asked. So internal distractions और external distraction में जब मैंने एग्जांपल दी थी कि इंटरनल से मुराद क्या है, ऐसे तो नहीं है कि जो हमारी घर की है इस तरह से, तो इसका एक बिल्कुल स्पेसिफिक रेलिवेंट आंसर इसका एक बन सकता था जो आप लोग दे सकते थे. एनीवेज, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो हमारे माइंड में, जो कि अभी एक हमारी कोलीग ने भी मेंशन किया कि हमारे माइंड के अंदर मुख्तलिफ परेशानियां या मुख्तलिफ चीज़ें जो चल रही होती हैं, ऑन गोइंग जो इश्यूज चल रहे होते हैं, वो हमारे इंटरनली डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ये वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि हमें अपेरेंटली दुनिया को नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो अब लेट्स से अब ये कोलीग ने बताया कि वो पीएचडी का थीसिस कर रही हैं, तो अगर वो पीएचडी का थीसिस करना चाह रही हैं, वो बैठी हैं करने के लिए, लेकिन उनके माइंड के अंदर खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है, कोई और इस तरह का मसला है, और वो जो टेंशन है वो नॉन स्टॉप माइंड के अंदर मौजूद है. तो अब आपसे अगर कहा गया कि अब आपको कुछ लिखना है तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जो डिस्ट्रैक्शन माइंड के अंदर मौजूद है दैट इज अफेक्टिंग इट. आवाज माइक ऑन नहीं किया हुआ आपने किसी ने. अच्छा, तो अब वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, वो आपको अफेक्ट कर रही हैं आपके उन गोल्स को अचीव करने में. वो टाइम के लिए जो आपने सेट किए, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, जो आप टाइम किसी चीज़ को देना चाह रहे थे, लेट से आप 15 मिनट 20 मिनट देना चाह रहे थे, आप आधा घंटा देना चाह रहे थे, तो उसके अंदर जैसी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, इवन कन्वर्सेशन के अंदर डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आपके बोलने में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आपके काम करने में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी. और ये हमारे यहाँ थोड़ा सा ना इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा एक समझे कि सोसाइटी के अंदर ओवरऑल ये एक इशू चल रहा है डिस्ट्रैक्शंस के हवाले से, कि जहाँ पे एवरीवन वांट्स टू इंटरप्ट, और हर बंदा चाहता है कि किसी तरीके से बस मैं अपना काम, अपने मामलात, अपनी चीज़ें किस तरीके से पहले कर लूँ. तो वो जो दूसरा बंदा जो कि पहले से मौजूद था, इवन यहाँ तक भी आप देखें कि कोई लाइन में खड़े हुए हैं तो दूसरे की कोशिश होगी कि वो लाइन तोड़ के आगे आ जाए. तो अब ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ इवल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता होपफुली हम इनको दूर कर लेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अब ये जो इंटरनल के साथ जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो कौन सी डिस्ट्रैक्शन होती हैं? मैंने अपने गोल सेट किए, मैं काम करने बैठा हूँ, मैं एक ईमेल लिखने बैठा हूँ, मुझे कॉल आ गई, मैं दोबारा ईमेल लिखने बैठा हूँ तो कोई कोलीग आ गया मेरे पास, फिर अगर लिखने बैठा हूँ तो कोई स्टूडेंट आ गया, तो ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो अब आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं. अच्छा, अब
इन प्रॉब्लम को ये जो आ रही हैं इनमें से एक्सटर्नल वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसको मैनेज करना आसान है, जिसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हैं दे आर मच मोर पावरफुल, उनको डील करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विल लर्न हाउ टू मैनेज बोथ द डिस्ट्रैक्शंस इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और भी मैं एक साथ आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इन डिस्ट्रैक्शंस के अंदर जो बहुत ज्यादा एक आजकल के दौर में एक समझे कि चैलेंज है हमारे सामने, वो चैलेंज ये है कि इन डिस्ट्रैक्शंस के अंदर ये जो हमारे पास अनवांटेड कंटेंट हमें रिसीव हो रहा है थ्रू एवरी पॉसिबल मीडिया, चाहे वो हम टीवी खोलें, कंप्यूटर की स्क्रीन खोलें, हम फेसबुक खोलें, इवन आप अगर कोई ब्राउज़र खोलते हैं, आप रिसर्च करने के लिए ब्राउज़र खोला और आपके ब्राउज़र ने 10 नोटिफिकेशन आपको दिखा दिए, आपने गूगल खोला और आपने कोई चीज़ सर्च किया तो उसने 15-20 ऐड भी साथ में आपको साथ में उसके दिखा दिए। मतलब राइट नाउ वो एक किसी ने मुझे आप लोगों ने शायद सुनी हो बात कि अगर कहीं कोई चीज़ फ्री मिल रही है ना आपको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो आप हैं। Do you get it? When you get something for free, this means you are the product. Does anyone understand what I'm saying? Yes, exactly. When everything is free for us, so we So are it the means ones. that you are the one who is product. Yes, You are the we are one the who is one being who is slaughtered. important. You are the one जिसको भी हमने जिस पे छुरी फिरनी है। और मजे की बात यह है कि वहां पे वो जो प्रोडक्ट है उसको पता भी नहीं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। Right now, we are consuming huge amount of content that we did not need, that we never needed, that we never wanted. But you cannot escape from it, can you? आप जो बातें कर रहे हैं फोन पे कर रहे हैं, आपका फोन आपकी बातों को सुन रहा है और उसकी बेसिस के ऊपर आप जब नेक्स्ट फेसबुक खोलेंगे तो आपने जो बातें की हैं उनमें से जो कीवर्ड्स उसने पिक किए हैं उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स आपको दिखाना शुरू कर देगा वो। डू यू नो कैसा हो रहा है? हैव यू सीन इट? Yeah, it is happening. It's happening. आप घर के अंदर बैठे हैं, आप स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, उनके अंदर माइक्स भी लगे हुए हैं, उनमें कैमरा भी लगे हुए हैं। अगेन दे आर लिस्टिंग टू यू, अगेन दे आर लिस्टिंग टू योर कन्वर्सेशन। और उसके बाद जब आप कोई प्रोडक्ट खोलेंगे वहां पे, उस प्रोडक्ट के अंदर इश्तिहारात आपकी कन्वर्सेशन से रिलेटेड होंगे, आपकी गूगल की ब्राउजिंग हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। वो जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसकी कुकीज आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं, जिसको कुकीज के नाम वो टेम्पररी फाइल्स होती हैं। उन फाइल्स के अंदर आपकी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जिस इन्फॉर्मेशन आपकी कि आपने किस प्रोडक्ट को, किस चीज को आप नेट पे देख रहे थे। तो जैसे ही अब आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, हर वेबसाइट पे उन प्रोडक्ट्स के इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे। So you're not getting Facebook for free, you're not getting Google for free, you're not getting all this thing जो आप इंटरनेट पे यूज करें for free, you are the product here. अब वो जो कंटेंट है, अच्छा फिर उससे जान छुड़वा ली आपने, कंप्यूटर से जान छुड़वा ली, तो हमारे यहाँ एक कौमी मिजाज बन चुका हुआ है कि हमने हर बंदे को जो है ना हमने मैसेज फॉरवर्ड करने हैं एक एक ग्रुप के अंदर। मतलब आपने अगर एक ग्रुप बनाया ना, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इंस्टेंस, आपने बनाया कि जी दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग फॉर इंस्टेंस, मुझे नहीं पता, अभी मैं सुन रहा था कि आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। तो आई डोंट नो कि ये मेरी जो गुफ्तगू है ये अगर किसी को डायरेक्टली किसी पे वो जाके लग जाए तो मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा, लेकिन मैं ये बताना जरूर चाहता हूँ, मैं ये पॉइंट स्टैब्लिश करना ये जरूर चाहता हूँ कि जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद के अलावा उसके अंदर कोई दूसरा मैसेज नहीं आना चाहिए, until unless के that is related to that interest of that particular group। अब हमारे यहाँ पे टीचर्स के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए, उन ग्रुप्स को हमने मकसद था कि इस ग्रुप को इस मकसद के लिए बनाया गया। जब उसके अंदर लोगों ने और मुख्तलिफ चीज़ें पोस्ट करना शुरू कर दी, रिलीजियस कंटेंट पोस्ट किए, दूसरे कंटेंट पोस्ट किए, तो उनको कहा गया कि नहीं यार इसको आप सिर्फ इसी मकसद के लिए रखें, रिलीजियस अगर आपको है तो आप उसको रिलीजियस ग्रुप बना लें जिसमें हम रिलीजियस उसको बना के हम सारे उसमें रिलीजियस डाल देंगे। इसी तरह से अगर आपको पॉलिटिकल कंटेंट करना तो यार उसके लिए पॉलिटिकल ग्रुप बना लें, लेकिन जो ग्रुप आपने जिस मकसद के लिए बनाया उसके अंदर उससे अलावा इररिलेवेंट कंटेंट नहीं भेजना। बट the moment you say this, some people get offensive, they feel it really bad कि जी हमारी जो है ना बोलने की, हमारी जो राइट है, हमारा बोलने का हक जो है वो मजरू हो रहा है, हमारा राइट ऑफ स्पीच मजरू हो रहा है, हमारा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मजरू हो रही है हमारी। और वो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए नहीं अंडरस्टैंड करते कि यार ये जो कंटेंट है, the more content you consume, the more it becomes part of you। आप जितनी इंटरनेट से जितनी चीजें, आप जितनी वीडियोस एक दिन में देखेंगे, जितने आप उस पर कंटेंट देखेंगे, ये सारा कंटेंट वन बाय वन, जैसे हम खाना खाते हैं ना तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी,
तो इस तरह से जो भी कंटेंट हम देखते हैं, वी आर कंज्यूमिंग दैट कंटेंट, एंड द मोर वी कंज्यूम दैट कंटेंट, द मोर इट बिकम्स पार्ट ऑफ अस। हमारी थिंकिंग का, हमारे पैटर्न्स का, हमारे सोचने का, हमारे माइंड का, हमारे इंटरप्रिटेशन का, ये सारी चीज़ों को उस कंटेंट पे बेस करना शुरू हो जाती हैं, जिस कंटेंट को हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल कंज्यूम करेंगे। तो एक चीज़ तो हम अपने आप को तहैया कर रहे हैं, हम सारे लोग जो इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं आज, कि हमने किसी को भी कोई भी चीज़ जब तक उसने मुझसे कही नहीं ना, तो हमने उसको भेजनी नहीं है, फॉरवर्ड नहीं करनी कि यार ये एक चीज़ है, तुम देखो इसको, लाजमी देखो, मैंने देखा है, मुझे अच्छी लगी, तुम भी इसको देखो। भाई क्यों देखें? उसने आपसे मांगी है क्या? नहीं मांगी, तो आप क्यों भेज रहे हैं उसको? मुझे तो यहाँ तक भी एक दफ़ा किसी ने बताया, और मेरे लिए एक बड़ी एक लेसन था मेरे लिए, कि जी मैंने एक दफ़ा देखा सामने, आई सॉ सम लेडी हु फेल डाउन, और आई वांटेड टू हेल्प हर, एंड आई वांटेड टू गो एंड हेल्प हर, कि जी आप गिर गई हैं तो मैं आपको, तो मेरे दोस्त एक साथ खड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते नहीं, डोंट गो until she asks you for help, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि यार मैं क्यों, मतलब मेरे सामने गिरी हुई है, तो उसने कहा जी वो खुद खड़ी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। उसको पता है अगर वो आपको भी देख रही है कि आप खड़े हुए हैं, लेकिन उसने आपसे हेल्प मांगी नहीं है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब बात थी। फिर मुझे किसी ने एक जिंदगी में कभी एक वो दिया कि जी आपने किसी को खामखा की एडवाइस नहीं देनी जब तक आपसे मांगी ना जाए। मैंने कहा नहीं, इसमें क्या बात है, मुझे एक चीज नजर आ रही है, मैं उसको मशवरा देता हूँ ना, उसको फायदा होगा। तो उसने कहा देख लो, एंड आई गिव द एडवाइस, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, मेरी एडवाइस की कदर नहीं की गई, उस नसीहत को कुछ समझा नहीं गया, क्योंकि दैट वाज अनइनवाइटेड अनवांटेड एडवाइस। सो दीज आर सम ऑफ द लेसन्स के। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी को मशवरा नहीं देना, आपको हेल्प नहीं करनी, दैट इज योर चॉइस टू मेक, बट इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्डिंग द कंटेंट्स, ये जो आपकी जो सोशल मीडिया पे मोबाइल के ऊपर इनकी बम्बारमेंट को अगर हम रोक लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समझें कंट्रीब्यूशन होगा हमारा, कि कोई बंदे हमें 50 चीजें भेजी और हमने आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं की, तो आपने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया उसके अंदर। सो और मेक श्योर कि हम उस कंटेंट का हिस्सा ना बनना शुरू हो जाए। तो एक दफा तो ये जो एक्सटर्नल कंटेंट और एक्सटर्नल कंटेंट में ये जो इन्फॉर्मेशन का कंटेंट आ रहा है, इससे किस तरीके से अगर हम बच जाएं तो ये हमारी हेल्प करेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, अभी एक कोलीग ने हमारी मेंशन की थी कुछ देर पहले, ये आपके सामने है, नजर आ रहा है आपको? कैन यू हियर मी? Yes, sir. जी। So we can. तो प्रोक्रेस्टिनेशन कितने लोग जानते हैं क्या चीज है? सर डिले करना। डिले करना, ठीक है। When we delay and postpone our work to do at a time, जब उस पर वक्त पे करने की बजाय हम कोशिश करते हैं, हमारे पास जब ज्यादा टाइम होता है, ये मैंने नोट किया, जिस दिन मेरे पास ज्यादा टाइम होता है मैं लेट होने लगती हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए, इस वजह से कि मैं उस दिन बड़ी रिलैक्स होती हूँ, जिस दिन मैं जल्दी करती हूँ उस दिन में आराम से सारे काम हो जाते हैं। गुड। प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? आपने बताया कि डिले करना है, कोई और भी इसमें बताएगा? सर ज्यादा सोचना और उसकी वजह से डिले होना। ज्यादा सोचना, उसकी वजह से डिले होना, ठीक जैसे है। वक्त गुजरने के बाद काम करना। वक्त गुजरने के बाद काम करना, ठीक है। I think overthinking also comes under procrastination. ठीक है। अभी एक कोलीग ने और ने भी मेंशन की ये बात, आप भी वही एंडोर्स कर रही हैं उस बात को कि जो ओवरथिंकिंग इज द रीजन। ओके सर किसी चीज को डिले करना, डेडलाइन तक का इंतजार करना, डेडलाइन के करीब उसको डिले करना, डेडलाइन का इंतजार करना, ये आप लोगों ने जो भी 2-3 चीजें बताई ना, ये एग्जैक्टली यही डेफिनेशंस बनती हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। इसके अंदर थोड़ी सी जी सर बताइए। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, छोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ठीक है। मैंने ना एक सेशन के अंदर ना लोगों को अशार से रोक दिया, और इधर ही पीजीसी की ट्रेनिंग सेशन था, तो आखिर में जब फीडबैक आई तो उसमें ये भी एतराज था कि जी आप हमें शेर पढ़ने से क्यों रोकते हैं। तो अच्छा अब मैं आज के सेशन के अंदर मैं चाहूंगा कि मैं जो, क्योंकि मेरी अभी भी मैंने इससे पहले भी गुजारिश की थी, ये कहा जा सकता है कि आज का काम कल पे मत छोड़ें। हाँ ये भी कहा जाता है। और लेकिन यहाँ पर अभी जो इन्होंने शेर पढ़ा, आई थिंक इट वाज वेरी रेलिवेंट,
क्योंकि जहां पे आपको कहीं पे कोई आउटकम का फेयर आ जाए आपके पास, जहां पे आपको ये लग रहा हो कि यार ये आउटकम कहीं गलत ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए, तो तब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ। दे ऑन वन हैंड यस, आज का काम कल पे मत छोड़ें, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें ये कभी बताया कि हम क्यों आज का काम कल पे छोड़ते हैं? Why do you think we put on something for tomorrow that we had to do today? Why? ये किसी ने बताया कि कोई बंदा आज का काम कल पे क्यों छोड़ता है? सवाल है आपसे। सर आउट ऑफ शेयर लेजीनेस भी हो सकता है। ओके, आउट ऑफ लेजीनेस। ओके ना, अब आपसे एक सवाल है। एक साहब या साहिबा जो कि कॉलेज की टीचर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और जिनका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जिनको अपनी चीज़ के बारे में पता भी है कि ये वैल्यू है, तो कितने चांसेस हैं कि वो लेजी होंगे? चांसेस फॉर हिम और हर बीइंग लेजी, हाउ, मतलब ये ज्यादा चांसेस हैं या ये कोई और या दूसरे के फैक्टर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। देखिए, मैं इसमें एक और चीज बताता हूँ। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, उसके अंदर एक बड़ा ही डेलिकेट किस्म का एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर बंदा काम करना चाहता है लेकिन कर पाता नहीं है। नाउ देयर इज दो सिनेरियो में बता रहा हूं आपको। एक सिनेरियो में काम करना ही नहीं चाह रहा, खत्म, बात खत्म हो गई। एक सिनेरियो ये है कि मैं काम करना चाह रहा हूं, मैं काम को देखता हूं, मैं उसको उठाता हूं और मैं फिर रख देता हूं, मैं बाद में करूंगा इसको। एक्सक्यूज मी, ये जो दूसरा सिनेरियो है ना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। सर इस पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूं। जी एक सेकेंड। अच्छा, मैं भी आप सारे लोगों को पॉइंट लेता हूं, क्योंकि मैं अब आप लोगों को जितना इसमें इन्वॉल्व करूंगा ना, उतना हम टाइम हमारा गड़बड़ होगी, और मुझे ये जो कि आज के कंटेंट्स खत्म करने हैं साथ साथ, अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होता तो देन आई वुड हैव टेकन मोर इनपुट फ्रॉम यू। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। मैं भी आपको मैंने दोबारा बताया, ये सिर्फ एक क्विकली आप दोबारा इस पर गौर कर लीजिए इस बात के ऊपर। There are two scenarios. One scenario, there is somebody who does not want to do anything just because they have no interest in it, maybe. वो करना नहीं चाहते उसको, उनकी नीयत नहीं है। Fair enough, बात खत्म हो गई। लेकिन there are some people who want to do it and feel that they are unable to do it. उसमें अब कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं उस काम को करने में? माइक अपना ऑफ करें जिनका माइक ऑन है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो उनको अफेक्ट कर रही हैं? फर्स्ट ईयर में दोबारा दाखिल हो गया, सर ने कहा था इसको नहीं रखना। सर ने कहा था कि इसको नहीं रखना। भाई ये मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि माइक ऑफ करें अपना। वजह भी लिख देना, ये रीजन में लिख देंगे, रीएडमिट। हो गया एडमिशन बच्चे को, हो गया, तो हम आगे बात कर लें प्रोक्रेस्टिनेशन पे। लेट मी ब्लॉक हिम। मैं एग्जांपल दूं, एक बेहतरीन एग्जांपल। खत्म हो गया, अंदाजा लगाओ। हमें बता के माइक बैक। I have to block him. ओवर आ कोई लैंड क्या हो सकता है? और गल बनो पर इस्लाम है, जाति और लोग क्या है? Is this तंजील? क्या नाम है इनका? और हम क्या है? तंजील ताहिर। मैंने म्यूट कर दिया, फिलहाल ब्लॉक नहीं किया। बट दिस इज वेरी मतलब एक अनएथिकल सी चीज है, और मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूँ। आई थिंक वी आर ऑल एडल्ट, वी आर मैच्योर इनफ, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। एनीवेज, सो अब मैं आपको उसका डिफरेंस बता रहा था, जो उसका प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, कि देखें, एक तरफ एक बंदे की इंटेंशन ही नहीं है काम करने की, उसने खत्म कर दिया। एक की इंटेंशन है लेकिन नहीं काम कर सकता। क्या आप लोग कभी इस सिचुएशन से गुजरे? देयर इज समथिंग यू वांट टू डू, you want to do something and then you feel like you cannot do it, or you just keep delaying it without having the intention of doing it. Sorry, with having the intention of doing it. सर ये मैं अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। मैंने अभी बेनोवलेंट फंड के बच्चों के फॉर्म फिल किए, और आप सोचें कि तकरीबन 1.5 मंथ वो मेरी बेड साइड पे पड़े रहे, सिर्फ इसलिए कि अभी बहुत टाइम है। अभी हालांकि उसमें 1-2 चीजें ही रह गई थी, मैं कर सकती थी और फौरन मैं उसको पोस्ट भी कर सकती थी, लेकिन मैं वही कि अभी बहुत टाइम है, अभी डेडलाइन में बहुत टाइम है, तो वो मैंने हाँ, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ उसके फैक्टर्स क्या हैं। और पहला फैक्टर ये जो मैडम आसमा तनवीर मेंशन कर रही थी, जो सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि जहां पे हमारी जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम
कि हमारे पास एंड द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी हैव टू डू, जिस तक हमारी इसकी मिस कैलकुलेशन होती है ना कि हमारे पास अवेलेबल टाइम कितना है और जो टास्क हमें दिया गया उस टास्क को करने में टाइम कितना लगना है, तो जब हम इन दोनों की मिस कैलकुलेशन करते हैं तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। टाइम अवेलेबल टाइम कितना है और उस काम को करने में टाइम रिक्वायर्ड टाइम कितना है, इन दोनों की मिस कैलकुलेशन जो है ना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। वन other reason why do we delay it? Sometimes we delay it because वो जो टास्क हमें मिला हुआ है, वो जो टास्क हमारे सामने मौजूद है, उस टास्क के अंदर हमें ये लग रहा है कि इट्स सो बिग, और इतना उसके अंदर वो है कि हमें लग रहा है कि वो टास्क जो है ना वो हमारे लिए करना मुश्किल हो रहा है, हम कर नहीं सकते, या हमारे लिए इसकी मिसाल मैं इस तरह से लेता हूं। मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ना दोबारा से मैं यहाँ लेके जा रहा हूं, ये अब आपके सामने स्क्रीन पे सोल्यूशन का लफ्ज लिखा हुआ, तो मैं एक छोटी सी ड्राइंग यहाँ पे बनाने लगा हूं। लेट्स से कि हमारे पास ये एक टास्क है, या थोड़ी देर के लिए इसकी मिसाल मैं यूं ले लेता हूं कि ये आपके सामने एक बॉक्स बन गया स्क्रीन पे। इसकी मिसाल मैं इस तरह से ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि हाथी का गोश्त हलाल है, अज्यूम करें, और मैं आप में से हर बंदे से कहूं कि आप सारों ने एक एक हाथी खाना है। अब हाथी का साइज जो है ना, ये जिस तरह बॉक्स है ना, ये समझें कि हाथी है एक लिहाज से, और ये एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक बंदा बना रहा हूं, कैन यू सी दिस जेंटलमैन? ये एक छोटा सा कैरेक्टर मैंने बनाया स्क्रीन पे। यस सर। अच्छा, अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हम है ना वो हैं हम, ये जो हमारे सामने कैरेक्टर है, ठीक है, दिस इज अस, एंड हमें क्या करना है, ये जो हमारे सामने लेट्स से कि ये हाथी है, हमें इसे खाना है। अब हम इससे बहुत छोटे हैं, टास्क बहुत बड़ा है। हाउ डू यू ईट इट? कैन यू ईट एन एलिफेंट इफ इट्स हलाल? नो, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। डिवाइड कर लेंगे हम इसको। क्या कर लेंगे? स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। Absolutely, thank you very much. A huge round of applause Not for in a you. single day or in a single attempt. There is no condition. इसमें ऐसी कोई कंडीशन हमने नहीं की कि इसको किस अंदाज में करना है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने यहां से एक छोटा सा पीस उठाया, इतना सा, और हमने इस पे उसको कंज्यूम कर लिया, फिर हमने एक और पीस उठाया, फिर हमने उसको कंज्यूम कर लिया, फिर एक और पीस उठाया, फिर उसको, तो हमने इसको छोटे छोटे पोर्शंस में तकसीम करते हुए हमने खाना शुरू कर दिया। एट द एंड क्या होगा भला? हाथी बचा होगा? Will there be any elephant left after some time? No. नहीं सर पीसेस करके फ्रिज में जो रख लेते हैं, है ना? आप खुद अंदाजा लगाएं, हमने कितने बड़े बड़े जानवर खाए हुए हैं, कितने बड़े बड़े हमने भैंसे खाई हुई हैं, बकरे खाए हुए हैं, हम में से हर बंदे ने। बकरा ईद भी तो आ रही है करीब। जी, तो कैसे खाए हुए हैं? क्योंकि we divide them into smaller portions. So one reason for procrastination is because the task that we have to do is so big that we feel that we cannot do it. Now what we can do is to break it into smaller chunks, smaller doable chunks. हर बंदे की अपने कैपेसिटी के मुताबिक उसको उतने छोटे पोर्शन में जो उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, उतने में तकसीम करके उसको करना शुरू कर देंगे, तो they can get it done. सर यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। मैं आपको अभी मैं आपसे माजरत, अभी मैं आपको वो, आई विश कि मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर उसको सुनता, लेकिन आई हैव टू मूव ऑन नाउ। जिंदगी रही तो फिर आपसे जरूर सुनेंगे इसको, आज के लिए माजरत। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? अब अगली चीज जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको, एक तो ये कि जो स्मॉलर पोर्शन के अंदर हम इसको कर लेते हैं, हम ही कर लेते हैं, एक और भी चीज है जो हमें रोकती है काम इसको कंप्लीट करने में, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो होता है फियर ऑफ फेलियर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। वो जब ये शेर सुनाया था, जो मैंने आज पहली बार कहा एक शेर के बारे में, कि मैंने कहा ये रेलिवेंट शेर था, क्योंकि नॉर्मली अशार जो है ना वो इररेलेवेंट होते हैं और मौका महल के मुताबिक नहीं होते, तो वो सेशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बट दिस वन वाज पर्टिकुलर वन वाज रेलिवेंट, कि हमें ये खौफ होता है कि कहीं ये ना हो जाए कि हमारे इस काम को करने के बाद जो आउटकम आए वो फेलियर की सूरत में हो। तो वी आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, एंड दैट फेलियर, फियर ऑफ फेलियर जो है ना, समटाइम also adds to procrastination. Then there is a third option.
और वो थर्ड जो है वो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि फियर ऑफ सक्सेस भी जो होता है ना, वो भी बाजुकत इट कॉजेज प्रोक्रेस्टिनेशन। फियर ऑफ सक्सेस के बारे में सुना आप लोगों में से किसी ने? Does anyone know about fear of success? सर आजकल हमारे साथ ये हुआ है, बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो ये फील कर रहे हैं कि हम इस इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। वो एक तो वो फेयर ऑफ फेलियर, वो तो फेयर ऑफ फेलियर हो गया ना, वो भी आपको बहुत सी चीजों से बाजुकत आप उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन फियर ऑफ सक्सेस के बारे में सवाल मेरा फियर ऑफ सक्सेस है। आई वांट रिस्पांस ऑन फियर ऑफ सक्सेस। जी मैडम बताइए। सर यही जो ट्रेनिंग है ना, इसमें आई हैव अ फियर ऑफ सक्सेस कि जब इसके बाद जो मेरी ड्यूटीज हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, पता नहीं मैं इस काबिल होंगी कि नहीं कि मैं उनको पूरा कर सकूं। दिस इज द फियर ऑफ सक्सेस आई हैव। Excellent. Thank you so much. This was a very, very good answer. So sometimes we do have this fear of success. We haven't talked about fear of success. We always talk about fear of failure, नाकामी। और जिंदगी में आपने नोट किया हो तो हमारे यहाँ ना हम हमेशा नाकामी के बारे में बातें, वालिदैन बच्चों को भी यही तरबियत दे रहे होते हैं, और हमें बाद में समझ आता है कि यार कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे रुकावट की वजह जो है ना वो फियर ऑफ सक्सेस भी था। मतलब एक डर था कि यार अगर मैंने यहाँ पे इस लेवल पे ये कामयाबी कर ली तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएंगी, या अगर मैंने ये कामयाबी कर ली तो सारी दुनिया के सामने, मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय पीएचडी आई हैड फियर ऑफ सक्सेस कि मेरी पीएचडी मुकम्मल हो जाएगी तो मतलब कितना अजीब लगेगा, मैं पीएचडी क्वालिफाइड, मतलब नो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मेरे पास तो ये चीजें नहीं है, मेरे पास तो ये स्किल नहीं है, मैं तो अपने आप को इतना काबिल नहीं समझ रहा। लेकिन फिर मैं पीएचडी डॉक्टर जब मुझे लोग कहेंगे तो मेरे पे तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि यू आर अ पीएचडी डॉक्टर नाउ, नो यू हैव दिस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग सोचेंगे कि ये बंदा बहुत काबिल है, बहुत लायक है, ये पीएचडी क्वालिफाइड है, मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। तो मुझे डर लगता था उससे, because that was putting some responsibility. So why we procrastinate? Because of fear of failure. We procrastinate because of fear of success. We procrastinate because the task is bigger than what we had already done in the past. And then we do procrastinate when we calculate the amount of time required and that amount of time which is available. When we miscalculate it, then we do this procrastination. अब प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट के अंदर हम आ गए, वी हैव टू ब्रेक इट। जी वो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना यार। जी ओके। नहीं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज इफ आई गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन we will lose the next things that I want to communicate. So I have to take control of this presentation and this communication. So माजरत मैंने कई जगहों पे आप लोगों को आज रोका है, नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कल मुझे फील हुआ था कि शायद हमारी आखिरी एक दो स्लाइड्स जो मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो मैं इफेक्टिवली नहीं कम्युनिकेट कर पाया आपको। तो वो मैं नहीं चाहता कि मैं आज वो वाला एपिसोड रिपीट हो जो कल हमारे साथ हुई ना। अब हमें करना क्या है? पहली चीज जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो बहुत ज्यादा कि हम में से हर बंदे का, अब कोई बंदा कहना कि जी मैं तो डायरी बनाता हूँ, तुम भी डायरी बनाओ तो तुम्हारे लिए डायरी काम करेगी। नो, इट डजंट हैव टू बी। व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। हर बंदे का अपना काम करने का स्टाइल है। तो एक चीज जो एक बंदे के लिए काम करती है जरूरी नहीं कि वही सेम चीज दूसरे बंदे पे भी काम करे। एक फॉर्मूला, एक रूल किसी एक पे काम करेगा तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे पे भी काम करे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हम समझते हैं कि जो चीज हमारे लिए काम कर गई है तो वो सबके लिए काम करेगी। अब नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन हैज डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनके काम करने के पैटर्न है। इवन यहाँ तक भी होता है कि हम में से हर शख्स के, हर बंदी के दिन के टाइमिंग में मुख्तलिफ आवर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वी आर मोस्ट प्रोडक्टिव। सम पीपल आर मोस्ट प्रोडक्टिव early in the morning, some people are most productive around 10, 11, 12, some people are most productive during the midday, some people are most productive in the afternoon, and some people are most productive later at night. Maybe some people work during night because they think that when they work at night they do their best performance. So everyone is different, so everyone has to find out their own so they have to find out and establish their own way of time management. So there is no one method of managing your time. So there are different things that we can do. And then लाइक टू डू लिस्ट आप सारे बनाते होंगे, आप सब नहीं भी बनाते होंगे तो किसी न किसी स्टेज पे बनाई जरूर होंगी। अगर आप याद करें तो बचपन में मुझे भी याद है, मेरे वालिदैन कहते थे टाइम टेबल बनाओ और यहाँ पे कमरे में डिस्प्ले करो। सुबह 8 बजे उठ के ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे, पूरे दिन का टाइम टेबल होता था। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो टाइम टेबल हमने एग्जैक्टली फॉलो कर पाए हो। इट नेवर हैपन।
It didn't work. It never worked. It will never work, by the way. But then there are to-do lists. But then there is another important thing. What we haven't discussed in the past. There is this list that we call not to-do list. हम to-do list तो सारे बनाते हैं ना. Not to-do list कभी बनाई है आप लोगों ने कि ये काम है जो मैंने नहीं करने. So when you decide that these are the things you're not going to do, this will help you to do the things that you want to do. Do you understand? Yes, exactly. So not to do list के ऊपर focus करना है हमने. अब मैं आपको to do list में नहीं, मैं not to do list के ऊपर. लेकिन to do list के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा. Because you are well aware of to do lists. You are well aware. You know, diary, mobile, टाइम टेबल, दीवार पे लिखना, लगाना, चार्ट लगाना, स्टिकी नोट्स लगाना, blah 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 blah. You're well aware of to do list. Non to do list में क्या है? Allow low, क्या करना है? आपने ऐसे low priority items को allow नहीं करना until unless you have successfully completed all the high priority items. So whenever you have things to do, उसमें जो low priority item है उनको low priority पर ही रखना है आपने, और high priority को high priority पर रखना है. Number 1. Number 2. ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि यार ये काम जो है I can easily delegate to someone else, go for it. और ये एक और चीज जो इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर बड़ा कॉमन है कि demands on your time from others that are either thoughtless or inappropriate. When somebody demands from you to do certain things for them, which you think that they shouldn't be demanding from you. और चौथा पॉइंट जो कि मेरे साथ मैंने यहाँ पे देखा है, हमारे यहाँ अक्सर होता है कि अगर आप में से कोई बंदी बहुत ज्यादा काम करने का शौकीन है और वो चाहता है कि मैं काम करूं और वो दिन रात काम करता है, तो यू नो व्हाट हैपेंस, दूसरे लोग भी अपना काम जो उनको करना चाहिए वो आके उसी बंदे को देते हैं कि तुम कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दैट फॉर मी, यार ये मुझसे नहीं हो रहा, ये तुम कर देते हो, जबकि वो काम उनके अपने करने का था. तो एनीथिंग दैट अ पर्सन शुड बी डूइंग हिम और हरसेल्फ, you should not be doing that tasks for them, for him or her. तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, नॉट टू डू लिस्ट वाले, टॉप प्रायोरिटी वाले, डेलीगेट वाले, दूसरों की डिमांड्स, और इसमें वो काम जो कि दूसरा खुद करना चाहिए. मतलब मुझे कई लोगों ने कई मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, सर वो रेफरेंस लेटर तो हमें लिख के दें आप. फेयर इनफ, रेफरेंस लेटर लिख के दूं. मैं उनको ये कहता हूं कि अब आपने अपने बारे में मुझे एक पेज लिख के दें जो आपको लगता है कि आपकी क्वालिटीज कौन सी हैं आपके अंदर, क्या अच्छी बातें और क्या बुरी बातें हैं. रेफरेंस में हमने यही लिखनी होती है ना. मैं उनसे कहता हूं मुझे वो लिख के भेज दो, फिर मैं उसके मुताबिक रेफरेंस खुद बनाऊंगा. और जब वो बंदा अपने बारे में एक पेज अगर नहीं लिख सकता ना, तो फिर मेरे से एक्सपेक्ट ना करे कि मैं उसके लिए एक पेज लिख के साइन करके दूंगा. नो, आई वोंट डू दैट. सो बिफोर आई राइट देम एनीथिंग, आई आस्क देम टू राइट समथिंग फॉर देम themselves. ठीक है. अब एक चीज तो ये, अब एक हमने इसमें एक चीज देखनी है, और एक इसके बाद एक मॉडल है जिसको हम कोविज क्वाड्रेंट मॉडल कहते हैं. इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी टास्क आपको करने हैं ना, उसको आप 4 चीजों में तकसीम करते हैं, उनके साथ उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लगाते हैं. उसको एक तो आप अर्जेंट और नॉट अर्जेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, दूसरा आप उसको इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट में डिवाइड करते हैं. अब एक टास्क ऐसा आया आपके पास जिस टास्क का आपको पता था कि ये अर्जेंट भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, एक ये टास्क है. उसके बाद एक टास्क ऐसा आया जो कि इंपॉर्टेंट जरूर था, ठीक है, लेकिन अर्जेंट नहीं था. इन दोनों में से पहले कौन सा करना है आपने? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट. अब एक काम जो है ना, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, आपने अब ये थोड़ा सा माइंड के अंदर प्रोसेस कर रहे हैं. वी ऑलवेज हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि इसमें से अर्जेंट कौन सा और इंपॉर्टेंट कौन सा है. अब एक टास्क ऐसा आया जो कि ये आपके सामने बड़ी बुरे कलर की लाइन बनी है, ठहरे मैं उसको कुछ चेंज करता हूं. ये जो कि अर्जेंट तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या हमें इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए? नो, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. we can postpone this. Yes. और उसके बाद if there is something which is neither important nor urgent, उस पे क्या करना है? We can skip that too, right? अच्छा, अब ये एक तो ये हमें ज़हन में रखना है कि जब कभी हमारे पास टाइम होंगे ना, सॉरी कोई टास्क आएगा ना, तो हमें उसको 4 के अंदर देखना है. अगली चीज हमें क्या करनी है, वो ये करनी है. अब ये किसके ऊपर करना है? ये जो ऊपर हमने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये हम जो ये जो इस एक ही बात कर रहे थे ना, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं जो कि अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है,
जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क अब आपको जब करना है तो फिर अब आपको इसमें क्या करना है? Either do it, or if you think that you cannot do it, what is the next thing that you can do? Find someone who can do it. Because that is urgent, because that is important. So delegating is okay. You can delegate to someone, right? If you think that you cannot do it, you cannot delegate it, then the next thing you can do is to defer it to another time. उसको आप किसी और टाइम के लिए उसको रख लें कि ये अभी ना हो सकता है, ना इसको डेलीगेट किया जा सकता, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है लिहाजा इसको डेफर कर दें। और लास्ट थिंग, जब आप किसी काम को कर भी नहीं सकते, डेलीगेट भी नहीं कर सकते, डेफर भी नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ दें। Drop it. नहीं हो सकता। That's right. फिर आप कह दें कि ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट, नॉट पॉसिबल। बट द फर्स्ट थिंग, डू इट, डेलीगेट इट, डेफर इट। ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और एक चीज और, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं माइंडफुलनेस के बारे में? What is mindfulness? Concentrating on a special task. Concentrating on the special task, okay. Quite to be mentally smart and to be alert and to be specific about things. Yes, thank you, thank you. आप में से जिन लोगों ने माइंडफुलनेस के बारे में, कोई और ऐसे लोग, मतलब आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे सेशंस होते हैं ना, इसके अंदर अगर आप गलत आंसर भी देंगे ना तो इट इज ओके, एंड नो वन शुड जज एनीवन एल्स बेस्ड ऑन व्हाट दे आर आंसरिंग। सो यस, हम कहीं पे किसी जगह पे एक बंदा बंदी जो है ना, उसको एक चीज के बारे में बहुत अवेयरनेस है, दूसरे को नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरा इनकॉम्पिटेंट है। इसका मतलब ये है कि नॉट एवरीवन कैन हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, राइट? So there are situations where somebody knows a lot and others don't know, but then there are situations where the other person knows a lot and the first person doesn't know much. So yes, so अगर आपको कहीं पे भी लगता हो ना कि आपको एक चीज के बारे में नहीं पता और आपको लगता है कि आपका आंसर गलत भी होगा, तो भी उस पर घबराना नहीं है आप लोगों ने, मतलब घबराना नहीं। That word itself is a very I think has a very different connotation now, but anyway, so what is mindfulness? Those who haven't heard about it. Sir, goals आपके गोल्स, ओके, मैं इसके एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। आप ओके, कोई और इसमें? एहसास होना और फिक्रमंद होना और उसकी डेडलाइन, ओके, क्लियर होना सर गोल बना लेना और उन्हें अचीव करने की भरपूर कोशिश करना माइंडफुलनेस है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चलते रहते हैं। बिग गोल्स, स्मॉलर अच्छा, अब गोल्स। माइंडफुलनेस की जो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है ना, स्पेसिफिक इसकी जो मीनिंग या इंटरप्रिटेशन है ना इसकी, वो ये है कि माइंडफुलनेस का मतलब बेसिकली ये है कि जो अभी हमने शुरू में जो दो कोलीग्स ने मेंशन किया, वो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन थी बाय द वे। जो शुरू में पहली दो कोलीग्स ने, जो खवातीन जिन्होंने भी मेंशन किया था कि माइंडफुलनेस के अंदर आपने कंसंट्रेशन करनी है अपनी किसी भी टास्क के ऊपर, जिस टास्क को आप कर रहे हैं। मसलन अगर आप खाना खा रहे हैं ना, तो आपकी तवज्जो जो होगी वो टीवी पे होनी चाहिए या खाने पे होनी चाहिए? खाने पे होनी चाहिए। खाने पे सर। और होती किधर है? खाने पे ही होनी चाहिए सर, खाने पे। होती किधर है? व्हाट्सएप मैसेज या मोबाइल पे या मोबाइल पर या और जगहों पे। मतलब द नहीं थिंग सर, इज, खाने पे। मतलब ठीक है, फेयर इनफ, मैं एक जनरल उसमें कमेंट वो कर रहा हूँ। माइंडफुलनेस में ये होता है, माइंडफुलनेस इज अ वंडरफुल टेक्निक टू मैनेज योर स्ट्रेसेस, टू मैनेज योर टाइम। वंडरफुल, एब्सोल्युटली मैजिकल टेक्निक। इसका सिंपल सादा, और इतनी सादा टेक्निक है कि इसमें सिंपल एक ही असूल है कि जो काम आप कर रहे हैं अपनी तवज्जो उसी काम पे रखें, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। और अगर कहीं आपको लगता है कि कोई चीज दूसरी डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो अपने साथ एक डायरी रखें, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, राइट डाउन दैट ऑन द डायरी एंड देन बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड कंटिन्यू डूइंग द टास्क दैट यू वांट टू डू, बट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ इट। आपकी तवज्जो जो होगी, आपकी उस चीज के ऊपर आपकी तवज्जो हो। क्लियर हो रही बात? मसलन अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपकी तवज्जो सीढ़ी पे, आप पानी पी रहे हैं तो आपकी तवज्जो पानी पे, आप चाय पी रहे हैं तो आपकी तवज्जो चाय के ऊपर।
मतलब गो कि हमारा ऐसा नहीं हो सकता, मल्टीटास्किंग हमारे कौमी मिजाज है, हम तीन चीज़ों की एक वक्त में तवज्जो दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, मतलब थिंक अबाउट इट। वो आपको एक ज़माने में एक आप लोगों ने पोएम पढ़ी होगी लेजर के नाम से, आप में से कुछ लोगों ने, देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। यस सर। क्या थी वो, क्या थी? We have no time to stand and stare. और वो क्या बात क्या कर रही थी वो? And to appreciate nature around us. उसका बेसिकली जो थीम था ना, उसका जो थीम था ना वो ये था कि वी आर नॉट माइंडफुल बेसिकली। उसका जो थीम था वो ये कि हम रोड पे चलते जा रहे हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं, हम तवज्जो नहीं दे सकते, हम कहीं रुक के किसी एक जगह पे खड़े होकर उस गिलहरी को देखें कि वो कैसे उसको जो मूंगफली खा रही है उसको, वो या वो जो भी अपनी वो खुराक खा रही है वो कैसे खा रही है, कितना खूबसूरत नज़ारा है उसके बकौल। तो अब हो क्या रहा है कि हम जो काम अपनी रूटीन में हम कर रहे होते हैं, हम उस काम को, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते उस चीज़ के ऊपर, और हम इग्नोर करके, और हम में से अक्सरियत, मैं नहीं कहता सारे लोग, ऑटो पायलट मोड पे होते हैं। ऑटो पायलट मोड पे समझते हैं? ऑटो पायलट क्या होता है? सर इसका ये मतलब वो कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमें ड्राइव कर रही होती हैं एंड दे टेक अस वेयरएवर दे वांट। वी आर जस्ट, हम सुबह उठे रोबोट की तरह, हमें पता ही नहीं है, हमने रोजाना की तरह एक ही रूटीन में उठे, रेडी हुए, तैयार हुए, कॉलेज पहुंच गए, पढ़ाया कराया, घर वापस आ गए, और फिर हमने रात को सो भी गया और हमें पता ही नहीं कि हमारा दिन क्या हुआ, हमारा दिन कहाँ से चला था, कहाँ गुजरा। मतलब वी डू नॉट हैव द कंट्रोल, वी डू नॉट हैव द स्टीयरिंग व्हील of the bus that we're driving, of the vehicle that we're driving, of the plane that we're flying. हम बस एक मशीनी अंदाज में उठे और उस रूटीन के अंदर लग के कर के शाम को आके घर आके थके टूटे थके हारे सो गए। जब माइंडफुल होंगे ना तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आप उठे हैं तो आज का जो ना आसमान कैसा दिख रहा है। आप जब उठे हैं तो आपने अपनी उठ के लेट से कि आपने अपनी बेडशीट अपने बिस्तर को सेट किया, आपने उठे, आपने अपना कमरा देखा, आपकी चीजें आपको नजर आ रही हैं कहाँ पे। जो माइंडफुल नहीं होते उनको तो ये भी नहीं पता होता कि मेरे कमरे के अंदर फलां जगह पे एक मग रखा था जो पिछले एक हफ्ते से पड़ा है और अभी भी वहां रखा हुआ है लेट से, और उनको पता नहीं होगा। So being mindful is an important technique of managing stress and managing time. ठीक है, क्लियर हो गई बात? और उसके बाद आखिरी चीज जिसके अंदर मैं करना चाह रहा था वो ये कि we have to learn to say no. क्योंकि ये जो नो ना कहना ना sometimes that also affects our time routine, that also affects our schedule, that also affects everything that we do. ठीक है, और ये I know कि it's not an easy thing, but we have to learn saying no, and people have to learn, you know, getting a no from others. When they ask for something and the other person say no, I cannot do it, then they have to learn to accept it. तो ये एक थोड़ी सी वो हैबिट है जिसको हमने वो करना है। और ये फाइनल चीजें जो है ना, फाइनल वर्ड्स हैं, ये अब आपके सामने आपको मैंने यहाँ लिखी हैं स्क्रीन के ऊपर कि जी अपनी नींद को अगर पूरा कर लें, अपने प्राइम मार्क्स के बारे में कर लें, डायरी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली मील्स, शेड्यूल इवनिंग एंड वीकेंड एक्टिविटीज दैट रिचार्ज यू। ये आखिरी जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वो काम है जो कि नॉर्मली हम नहीं करते। हमने 6 महीने, हम एक साल, हमें पता नहीं होता कि हमने बस मशीनी अंदाज में हम चलते रहे, रोबोट की तरह काम करते रहे एंड दैट्स इट, एट द एंड पूरा साल गुजर गया। हाउ मेनी इवनिंग्स एट द वीकेंड डिड वी स्पेंड टू रीचार्ज आवरसेल्व्स, टू री-एनर्जाइज आवरसेल्व्स, जहाँ पे हमें कुछ खेलने का, हंसने का, बातें करने का मौका मिल सके। To do add that schedule in your routine activities that will help you establish your week and your months and your years and achieve your goals. And that is end of my session today, and I think we've completed it exactly at जो भी आपका I think 1 बज गया। Yes sir. Yes. मैं नहीं चाहता था कि असल में आज का सेक्शन चूंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर था तो मैं नहीं चाहता था कि आज हमारी जो है ना टाइमिंग में गड़बड़ हो आज। So I wanted to finish this, so that's it from my side. Okay, thank you sir, thanks a lot.